बोल. आ गए लाइव. हिमांशु इंस्टा पे स्टोरी शेयर कर दे प्लीज. हिमांशु तेरी शर्ट है या बनियान है वो? शर्ट है ब्रो, द हेल. ऐसा नहीं लग रहा वो बनियान स्लिप हो रही है, स्लिप है बेसिकली. It looks like That's you are a character out of Himanshu Jubilee. saying shirt hai bro is the first line of this 95th episode. I think in 95 पे ना अभी हम लोग. Wow. 95 episodes of the DissContent Podcast, and with that biannual podcast. DissContent Podcast, which the only podcast that packs so much of a punch in one episode, जो आपको 2-3 महीने काफी रहता है. और नल्ले पॉडकास्टर्स की तरह हमें रील बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. हमारा पॉडकास्ट खुद ही काफी है. Mr. Pink is here. Hi, Mr. Pink. Thank you so much. You've been a member, I noticed. But Mr. Pink doesn't want to be a part of our WhatsApp group, which is pretty much the only perk we offer for anything. I don't know why. Maybe he's like, he has. मैंने एक और चीज देखी, मैं कभी भी randomly कोई भी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर हो, कुछ भी, किसी का भी, अमेरिकन, इंडियन, जिसका भी हो, मिस्टर पिंक के कमेंट रहते हैं भाई उसमें. पता नहीं कैसे, हमेशा. Either it's like a massive cult or it's just this one dude who does this all day. पहले भी बात की थी ना कि मिस्टर पिंक एक्चुअली बॉट है. फिर उसने बोला था भाई बॉट नहीं हूं मैं. नहीं, वो he's the CEO of YouTube. He's the new CEO of YouTube actually. But I would like to mention this because only 6 people are here so far. And people from our WhatsApp group are here. Vede is here. Hi Vede. Ronit is here. Ronit, I have a massive complaint with you. Avinash also. भाई हम लोग अपना पॉडकास्ट जब हमारा खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, हम लोग को-फाउंडर व्हाट्सएप ग्रुप, इतने अनइम्पोर्टेंट है हम लोग अपना पॉडकास्ट शेयर करते हैं, मतलब हफ्तों बाद, महीनों बाद पॉडकास्ट वापस आ रहा है, और हम लोग ऐसा होता है कि फक थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा, लोग थोड़े बोलेंगे ओ हम लोग आ रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं. इमीडिएटली अविनाश has shared a different thing, या रौनक कुछ ना कुछ शेयर कर दे, और हमेशा विद इन अ मिनट ऑफ अस शेयरिंग द, तो हमें forget YouTube, Insta, whatever, we don't get traction in the community that we have built. Okay, so that is where we are at. But with that, I'm Aditya Khanna. With me are Bharat Mishra. Hello. And Himanshu. Hi guys. And we are back with the 95th episode of the DissContent Podcast. We're 5 short of the 100. We have big plans for the 100th episode. जो इस साल होगा. जो हमको, जो हो इस साल हम ट्राई करेंगे कि हो जाए, क्योंकि मई तो आ चुका है. So I don't know. But yeah, savoring today's victory with a gin and tonic, where he has said yes, the Congress has won in Karnataka, and we were okay. So actually, Cinephile has said why you guys haven't done episode on Jubilee. That's a great question. One is because we haven't done an episode since Jubilee has come out about 2 months ago, and the other reason is that हमने अप्रैल में किया था ना, अप्रैल शुरू में या मार्च एंड में किया था हमने लास्ट एपिसोड. अप्रैल शुरू में आया था जुबली. So the reason we haven't done an episode on Jubilee is because the writer of Jubilee, Atul Sabral, he's kind of my boss, and like we work together, and I have asked him to come, and he's agreed very graciously. So he's going to be coming on the episode, on one of the episodes soon, so we'll just talk about it with him, though we can give our basic views on. तुमने देख लिया पूरा? I think भरत तूने 2 ही एपिसोड देखे थे. 4 देखे हैं मैंने. और हिमांशु तूने देख लिया? नहीं, पूरा नहीं देखा. Then तो we cannot really discuss, but we can give a actually we should start from this, and let's remember that this is like the guest will be coming, so keep that in mind while giving your great reviews. I'm just kidding. So yeah, Bharat, तेरे को कैसा लगा with the 4 episodes? अच्छा लग रहा है मुझे तो अभी. I'm really enjoying it. I think it's very solid. Genuinely, like अभी ऐसा कुछ बोलने को है नहीं, because I've been hooked only to it, and I feel yeah, कुछ मुझे, I have no comments. It's very good. It's damn good. And Himanshu? Yeah, मैंने first episode देखा है. Oh, only the first. हाँ. And you but I like it. I'll tell you what it's reminding me of. So lots of people are mentioning that there are a lot of Easter eggs in it, right? And I had just finished reading a biography on Kishore Kumar. Okay. And you know his brother Ashok Kumar, and I think the founder of that company, Himanshu Rai, and the whole group of people. Yeah. And I had just finished reading that book, and that's when I started watching Jubilee, and I thought I could relate
very heavily with You had a lot with more context of it was crazy reading it, and like out of मुझे नहीं पता था Jubilees about that. Suddenly it became about it, it became No, it so. is about that. It is about that. There is so Apar Shakti. He has a younger brother, right, in the film, and if you guys remember. तो अभी हाँ तो ये चीज मैं भरत को मिला था अभी recently, and we were discussing this, and I did not want to say this to Bharat because then it would be a spoiler. चलो But, छोड़ो. But actually, if you know the real story, तो क्या ही spoiler. But still, I don't want to. Let us get to it. But by the way, what is the book called that you read? देखना पड़ेगा. I'll get my Kindle and I'll tell you. Okay. Later. Yeah, my view on Jubilee is, and not just because my job could. I'm kidding. Fuck, I don't know why. So, no, I really loved the show. I really loved watching it, especially because I like it when period stories or historical stuff is treated with some due respect and fairly realistically, and people in that are not talking necessarily like, like they're in a theater crew from the 80s in Bengal. So they're talking normally, they're talking like normal people. That is really good. Obviously movies about movies or shows about movies is very enjoyable to people like us, so that there is that part of it. But ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि बॉलीवुड जितनी पुरानी इंडस्ट्री है उसका लोर अब तक किसी ने ढंग से कैप्चर नहीं किया. There are films that attempt to capture it or do like a bit of self-aware this thing or humor, like Om Shanti Om did it, or certain films do it which are like based in the past sort of eras. But truly capturing the zeitgeist of the 40s, 50s, whatever, is pretty cool. I think it's very interesting, and it's a very, very well made show. And I remember very briefly, Manto touched upon the film. Manto touched upon the Bombay film back in the day, because Manto, by the way, has also written a book on the Bombay film industry called Stars from Another Sky. Correct. Which is also I've also recently bought a book by Ishmat Chugtai called A Very Strange Man, which is about her interactions with Guru Dutt while working in Bombay. So very interesting. Also, watching Jubilee was another great realization that how fleeting all of this stuff is. In that we are all, at least not Himanshu, but Bharat and I are in Bombay. We are working in the industry. We're, and you don't hear of, these are not things that you hear of anymore. These names you don't really, okay, Kishore Kumar, yes. But apart from that, it's not like, these things die out. And I think a lot of the stars that are active today, the bigger names or the bigger, very self-important people, producers also active, I think everyone, it would do well for them to watch this once with a very critical eye on themselves. Just to remind them how fleeting your own careers and your own names are in this, that you feel are, completely infallible. Yeah. So 9 people watching. Thank you guys for joining us. Please do like the stream. What do we want to discuss? I wanted to talk about, because you mentioned it, right? How they speak. So I heard a bunch of criticism on that note. I don't know what's the truth. What is actually how it was. Ki bhai, the lingo sounds very similar to how we speak. Correct. मतलब हम लोग जिस तरीके से, जिस अंदाज से गालियां वालियां भी देते हैं, वैसा ही उसमें है. So I spoke to a bunch of people who said कि यार, that took me out of that era. But my question is कि how do you know कि वो वैसे नहीं बात करते थे या वो वैसे बात करते थे? मुझे नहीं मालूम कि कितनी क्या सच है. मतलब मेरे पास ऐसे जो लोग ऐसा क्रिटिसिज्म करते हैं उनके लिए थोड़ी सी तीखी टिप्पणी है, which is कि I think they enjoy the aesthetics of things more than the meat or the material or the story. But as a historic whatever geek, I would like to know कि क्या भाषा थी. मतलब क्योंकि Bollywood will have us believe otherwise, right? Regular Bollywood will have us believe कि उस समय तहजीब और घंटा भाई तुम्हारी फिल्म, खाली वो फिल्म में वैसे बात करते होंगे, बट बाहर तो वो वैसे ही बात करेंगे ना जैसे नॉर्मली इंडिया में तब लोग बात कर रहे थे, तो वही होगा. मतलब I don't know what I think the expectation is that you
everyone should be overacting. I feel like everyone's expectation is that कि तुम थोड़ा सा और तुम 2-4 और उर्दू के शब्द बोलो उसमें, बस उनका वही है ख्याली कि so that it's that घोड़े को ये जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ मैं जो मूवी थी उसमें एक वो था ना that there is a character who takes you on these walks around old Delhi and वो तहजीब. तो आई थिंक दैट क्राउड हाँ वो उनको खाली वो टेक्सचर में इंटरेस्ट है, which is fine, people can have that, but I think the meat of it is the story and the people and the characters and their whatever their aspirations and everything. So I like that way more. But yeah, I think there are lots of people dropping off also because I think they did think we were going to talk about Karnataka elections, so which we are not. Yeah, we've kept it sort of open for today, so you guys can also ask us stuff that you'd want us to talk about. We can just generally go over things that we've watched. किसी ने इधर Succession updated पूरा देखा है अब तक? मैंने नहीं 3 एपिसोड देखे हैं. मैंने भी 3 या 4 देखे. मैंने 3. कितने आ चुके हैं? 8. इस सीजन में 8 एपिसोड 8 आ चुके हैं. आई डोंट नो आगे और कितने, बट या मतलब पिछले हर सीजन में तो 6 एपिसोड टोटल थे ना? ऐसा कुछ नहीं 8 थे यार. 8 या 9 या ऐसे कुछ तो थे. हाँ 6 नहीं थे कभी. 6 कब थे? नहीं थे क्या? तो 8 थे. 8 आ चुके हैं, इसका मतलब सीजन फिनाले होने वाले हैं ना? आई एम श्योर होने वाला है. कल नहीं परसों. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. फिर अगला एपिसोड ना सक्सेशन स्पॉइलर होने वाला है. मैं मुझे भी देखना आ गया. I have been lately obsessed with an anime called Hajime no Ippo, which is fucking epic. It is a boxing anime. I can't recommend it enough. It is very. I have to give some context. The manga जिस पे वो based है, it was written in the 80s. There is every now and then, very rarely, there are every now and then really fucked up, like weird sexual humor and homophobic humor. There is all of that stuff. If you can overlook that and for the time that it was written in, the rest of it is it actually feels like you're watching boxing. Unka attention to detail itna sahi hai ki jo the techniques, or every time there is a boxing match happening in the show, it actually feels like a proper match and they're describing everything. And to the point that after that, I have started looking up actual boxing matches and started to understand the sport, which is pretty cool. मैंने एक एनीमे मूवी देखी थी अभी, सुजुमे, and it's very good. It's very beautiful. And मतलब I've seen the previous film of the same director. I'm forgetting his name. Tell Your Name. The film was on Netflix. So I saw Your Name and then I watched this one after. Your Name जब Netflix में तब निकला था तब मैंने देखा था. तो उसके बाद I saw this film now. So and it was a very good experience. It's funny, sweet, light, and at the same time really deep. So it's one of the good ones. If you can actually, and Guwahati mein for some reason it was for free. Like they were showing. So it's had a wide release in India. मतलब अफवाह को इतने shows नहीं मिले, इतने सुजुमे को मिले हैं. ठीक है, by the way. So just letting Sudhir Mishra know that. अफवाह को बॉम्बे में day 1 पे 10 shows थे. मुझे आज जाना था. मैं आज था फ्री हुआ, मुझे आज जाना था, पर फिर it ain't there. So by the way, just before we go on to other topics, Ron is saying it's कहाँ पर इसने लिखा है भाई? हाँ, उसने बोला why isn't attention to detail important? Think it's most important part of art, to be honest. And then he's 3-4 और चीजें उसने लिखी है. I'm not talking about attention to detail. I'm talking about just the simple thing of the language or the way that the characters are speaking. That is really good. If वाले पे बात कर रहे हैं नहीं वो जुबली की बात कर रहा है. आई थिंक वो जुबली का जो मैंने बोला ना that वो right. Language of the characters. I think it's great if a filmmaker can choose to and figure out, and they can put a lot of detail into making sure characters speak exactly how they used to. But I think for me that is a much lesser important detail. I'm willing to forego that if a filmmaker is sure that I want to do this, I want the people today to understand it the way they would, in the same way that Dibakar Banerjee did in
in Byomkesh. Byomkesh Bakshi, where Bengali को उन्होंने हिंदी कर दिया, and in the end the character says मुझे लगता है आप बंगाली नहीं समझते, ऐसा कुछ तो. And Valkyrie में उन्होंने German को English कर दिया पूरा. So it's just that I think it doesn't make, as long as you have a solid film other than that, I think it's perfectly fine. In fact I prefer it in certain cases. Yeah. हाँ, कोई तो कुछ कह रहा था. यार एक सेकंड, एक वो दूं सुजुमे का बेसिक जस्ट. हाँ बता ना. I think I want to sell it to you guys so that you guys go watch it. So Japan में काफी सारे like earthquakes होते हैं ना, and some of them are very severe, like very serious earthquakes. So the stories about has tried the writer and the director together. I think it's the same person. I might be wrong. They've tried to create the story about why there are so many earthquakes in Japan, and they're trying to link it to, you know, another realm which keeps trying to attack our realm, and you know there are portals in our realm which some people have to close. Nice. And if you let it open, then you know the earthquake starts coming and people die. So there are people in Japan who, like a secret society, who has to go and close doors, and you know those doors are open and whatever. So you have to travel around Japan and look for a door somewhere or the other. So that's like a very interesting, beautiful, aesthetic travel kind of a you know. Is it like a hardcore sci-fi thing like Ghost in the Shell and Akira, or is it more fantastical and fantastical and very, it's more about aesthetics and like thoda vibe hai. Okay. It's not about have you guys seen Your Name? Nahi yaar, I have not. Uska bhi story aisa hi hai. Uska bhi story aisa hai. I've heard a lot about it. Uska music is also very popular, I've heard. Yeah, it's very beautiful. So I'll tell you one sentence about Your Name also. So it's like two people who like fall in love, but then suddenly are transported by different realms, which are also different timelines, like not in the same year anymore. One person goes to like 19 something, like a couple of years back, like 13-14 साल पहले चला जाता है एक बंदा. So the girl and the boy, the only way they have to meet again is by remembering each other's name. But every time they come close to each other in the same location, even though they're in separate timelines, they start to forget their name. So it's just like they have to fight with themselves to kind of meet each other. So that's the story. It is a very beautiful. I think you guys will like it. Kabhi baith ke dekho. Ronit is still commenting on the same thing. Ronit, we will continue this on the WhatsApp group. I'm not spending the whole episode talking about this. But was he talking about Jubilee or was he talking about? No, he was talking about Jubilee. मैंने बोला था कि वो aesthetic, that people who are obsessed with aesthetics. He's misunderstanding me, saying that for me to mean all aesthetics in cinema. That's not what I meant. But yeah, anyway. So yeah, there is somebody would like to know our views. Amir Khan would like to know. Thank you, sir. Would like to know our views on the recent blockbuster, the Kerala story. On the Kerala story. Bharat, have you watched it? Himanshu, have you watched it? I have also not watched it. Sir, you will not get what you wanted today from us. We have become smarter since. हमने try किया था वो वाला देखने का. हमने किया वो वाला देखा. कश्मीर फाइल भाई हमने पूरी देखी थी. But देख मैं एक अच्छे फिल्म मेकर का नॉक ऑफ जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री, वो मैं देख सकता हूँ. मैं एक विवेक अग्निहोत्री ऐसे फिल्म मेकर का नॉक ऑफ मैं नहीं देख सकता. ठीक है, मेरे में उतनी क्षमता नहीं है. यहाँ मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा. So yeah, I have no interest in watching the movie. Yeah, I mean that's all I want to say. Abhyuday, I might be pronouncing his name wrong. Abhyuday Mehrotra. He's talking about Punyan Selvan 2. Has anybody seen it? Yeah, Bharat has seen. I've seen one. I've not seen two. I've seen one. PS2 is better than one, except the last like 20 minutes, which I think is ghost directed by Bijoy Nambiar. Because Bijoy Nambiar is the second unit director of this film. Okay. बहुत सारे स्लो मोशन शॉट्स हैं क्या मूवी में? हाँ वैसा है. और बारिश विजय सर ने किया है. मतलब वो नहीं बारिश नहीं है, बट ऐसे स्लो पूरा लास्ट का 20 मिनट्स इज एक तो वन रैंडम battle which is not needed. Okay, it just appears, and one random montage of
And so it's supposed to be like have you guys read anything about the Cholas? Like, do you know anything about the first thing about the Cholas? I know basics of that. They expanded their empires into Southeast Asia, Indonesia. They set up empires over there. If you had one king to name in the Cholas, Raja. Raja Chola. The last song is called Raja Chola, and it's about one of the characters in the film becoming Raja Chola. Correct. And that is very, very nicely done. I think, and you know, they've built up this whole romantic angle between Aditya. If you guys have watched Aditya Karikalan, yes. Aditya Karikalan and Nandini. Yeah. They really milk it. मतलब वो दिखता है कि भाई इसमें मणिरत्नम ने मतलब किया है काम इसमें. So मतलब वो बहुत genuinely, that is like the centerpiece of the film, where it's like certain movies are centered around one event either happening or has happened, right? कि ये एक event होने वाला है. Like in Terminator 2, it's like Judgment Day. So in PS2, it is, when will they meet and what will happen when they meet? And it really, really does pay off. How is Aishwarya Rai in the second part? I liked her in the first part. She's good. She's very good, actually. But I think this one, Vikram is very good. Vikram is very, very good. I like the character of the Warner guy. Correct. I know the guy who's the adventurer who just I the really mouthpiece like of the story. Yeah, I really like that character. But it's very interesting. अगर तुम लोग देखना PS2, we can discuss it a lot, because I am still not sure who the protagonist is, because Onion Selvan is the name, but he barely is there in both movies. Even in PS2, he's there. He's more prominent than in one. In one में तो कुछ नहीं कर रहा है ना, वो गायब है basically. Two में there is something happening to him, but it's like a very passive character. He's not the active this one. I have a very weird observation to make. अगर थोड़ी मेरे को permission दी जाए, which is that, do you think people look better attractive in Mani Ratnam films than they do in other movies? Because I feel like he knows something that others don't. Because I really thought everyone looked like really attractive. Also, like for example, like Aishwarya Rai. Okay, I'm nobody to comment on anyone. So I'm not that. I don't find her to be that attractive as not your type. Even when I was growing up, like, you know, when she was everything basically. So, but in his movies, in this one also, in apna yaar Iruvar also, and I don't know, she looks much more attractive to me. Maybe meri problem hai shayad ye. But which I'm putting on Mani Ratnam. Yeah. So yeah, never mind that. Himanshu had something to say. Something. I think. Who do you find that most attractive in PS1? What I was about to say is, Aishwarya really looked amazing in Ravan also. Yeah. I don't remember it. Yeah. I think Ravan mein she was very different from all her other films, and also like I think her eyes are blue, right? Like, you know, for some reason they color corrected in Ravan as electric blue, like or green, something like that. Correct. Which never comes out in other movies. Like other movies always like they don't focus on these things, you know, they don't do like color correction well, and they don't care for some detail. In PS2, there's an entire plot point around her beauty. Himanshu is completely wrong, because do not ask me why I remember this and why it's in my core memories. But in the movie Khaki, there is a whole song about Aishwarya Rai's blue eyes, okay, which is called Dil Duba, which Akshay Kumar sings for. I don't know why this is burnt into my brain. Yeah, so. But blue hai na? Yeah, her whole it is part of her appeal generally. Never noticed. Yeah. But yeah, उन्होंने बहुत अच्छे, by the way, PS2 में there's an entire plot point around her beauty, like how she's more beautiful than any other woman in the film. That's not true. Savita Dhulipala, I think it's much more attractive. Okay, this is not really. ये तो personal बात हो गई फिर भाई. It's okay, fine. Now that I lose on this front, everyone tell us who is more. I don't know what kind of podcast we're running over here. But ये तो बोल ही सकते हैं, मतलब I don't know why we're So but yeah, anyway, anything else on PS2? Music, how's the music? तुम लोग देखो, very good music, dude. Fucking great music. And there's a funny thing. If you look at the PS2 anthem on YouTube, na,
It has rap in it, okay, and it's really random. And A.R. Rahman is playing with a sword in that. So यार ये हिस्टोरिकल फिल्म में अगर कोई थोड़ा सा ये एकदम एक्सट्रीमली मॉडर्न म्यूजिक डालता है, इट कैन गो हॉरिबली रॉन्ग और राइट. जैसे इन अगेन आई एम रेफरेंसिंग ब्योमकेश बख्शी, उसमें थोड़ा बहुत मैड बॉय मिंग का म्यूजिक है जो मुझे उतना अच्छा, which did not belong, but then there is some other like really lo-fi अरे भाई songs, and then there is that one where it goes like no 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 no. वो मेरे को बहुत सही लगता है. और दोनों उसमें उसका भी म्यूजिक है यार. कौन है वो तुम्हारा इंडी आर्टिस्ट जो हिंदी और दोनों में जो अपना ये लिफाफा. हाँ लिफाफा एंड उसका इंग्लिश में कुछ और नाम है. हाँ लिफा वेरी गुड. सॉरी तुम लोग याद है प्रतीक कुहाड़, एक और बंदा है प्रतीक कुहाड़ का, मेरे को याद है एक बार इसने बाबा जोगेश्वरी ऑन हिज, और आई थिंक मे बी ताड़पत्री टॉकीज वन ऑफ दिस, बाबा जोगेश्वरी उसने एक 20 सेकंड का वीडियो डाला था ऑफ हिम नेक्स्ट टू लाइक अ लाइट, और ऐसे वो प्रिटेंडिंग टू बी प्रतीक कुहाड़, एकदम क्लोज अप ऐसे था, and he goes like सांस है. It just does that. It's the funniest, one of the funniest videos on the internet. I'd highly recommend. एक चीज हम बात करना भूल गए जो लोग मेंशन कर रहे हैं, of course, but yeah, of course जुबली का हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे, but Jubilee's music by Amit Trivedi is a great album, man. I think it's a great return to form. Amit Trivedi, I mean, it's not like his form went away anywhere, but didn't he? I thought he did a very similar era of music. Lutera. No, recently in another music related film यार. वो कौन सी जो बेकार, मतलब not बेकार, but जिसमें रुबाइयाँ था गाना, रुबाइयाँ और घोड़े पे सवार. तुमने देखी थी और बात भी की थी. That girl का ना, the name of that. तृप्ति डिमरी की फिल्म. हाँ, घोड़े पे सवार बोला. हाँ, Spotify में देखना पड़ेगा. Same era ही. कला. Yeah. It belongs to the similar era and similar music style. हाँ, which is interesting. हाँ, by the way, वैदेही ने रिमाइंड किया हमको that भरत उसको इंग्लिश में envelope नहीं, उसको पीटर कैट रिकॉर्डिंग कंपनी है उसका नाम. So, hey Ronit Singh, Sobita is better than Aishwarya. I'm with you, Aditya bhai. भाई Ronit 14 साल का है तो भाई, हाँ. Congratulations on being Gen Z. Yeah. Alokananda Dasgupta's background music. Praise Alexander the Great, Mr. Pink has said. Hey, Alokananda, background music in where? She did Sacred Games also, I think. He or she? I don't know. But what did they give music in this one? PS2? I guess. I don't know. I have no clue. So, हाँ, जिसने ये नहीं, उसने कला लिखा है. Cinephile 007. Where did Alokananda Dasgupta? What are you talking about, buddy? Please tell us more. One big thing I want to talk about, a massive thing, which might be कि टाइम आ गया सर का भी, जैसे विराट कोहली फॉर्म में आए थे जैसे अनुराग कश्यप भी फॉर्म में आ रहे हैं, which is Kennedy का ट्रेलर टीजर आया, and it's the most Anurag Kashyap 2000 and the sweet spot of 2008 to 13 of Anurag Kashyap. Very similar in that way. Rahul Bhatt, Sunny Leon are in the movie. What do you guys think of the teaser, Bharat? I really like it. I think it's like it reminded me of Ugly and Raman Raghav. That's the era you're referring to also, right? Yeah. नहीं, but 2008 में के बाद तो गैंग्स ऑफ वासेपुर भी आया था ना. वासेपुर, गुलाल, Ugly, Yellow Boots, all of them, basically all, everything. except for the last 3-4. Okay, I would say this I would put in the same league as if I was to make lists of Kashyap filmography, I would put this Kennedy, just going off the teaser alone, in the space of No Smoking, Panch, Ugly, Raman Raghav, and Girl in Yellow Boots. These 5 fit into one subgenre of low budget crazy. Low budget. Yeah. Sensibilities, I guess. और इसमें वो he's come back to the thing that the rest of the world disliked Anurag Kashyap for, and all of us loved Anurag Kashyap for, which was the random बकचोदी. जैसे उसमें एक शॉट है टीजर में कि वो किसी को धक्का देके गिरा रहा है और किसी ने हेडफोन पहना हुआ है और वो कुछ तो एक वो मतलब मैकेनिक का काम कर रहा है और पीछे बॉडी गिरी है और उसको सुनाई दे. मतलब वो सब चीजें जो करता था उसमें ही तो मजा, वही तो वो मस्ती वापस आ गई. आई फील. हिमांशु, तेरे को कैसा लगा टीजर? यार देखा नहीं है, सॉरी.
I'm sorry. What? तूने कैंडिडेट टीजर नहीं देखा? So जानबूझ के नहीं देखा. Okay. मतलब you थोड़ा waiting for the trailer. मुझे पोस्टर बहुत अच्छा लग गया एंड आई वाज कन्विंस्ड कि देखना है. जब ऐसी मूवीज होती है ना जैसे ओपेनहाइमर, मैंने नहीं देखा ट्रेलर टीजर, मैंने सब छोड़ दिया. मत देख. मैंने आज देखा, ये बहुत बहुत बड़ी अच्छा गलती है. की देख के. मुझे नहीं देखनी, मुझे देखने के मन, मुझे डायरेक्टली इंटरस्टेलर का भी ट्रेलर नहीं देखा था, मुझे डायरेक्टली हॉल में देखना. मेरे विश के अगेंस्ट मैंने देखा ओपेनहाइमर का ट्रेलर, क्योंकि मेरी फिल्म के पहले आ गया एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेलर देव रिलीज. मतलब एंड उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहा है बेसिकली एंड इट वाज वियना, जो ये वाले में तो खाली उसका बाल दिखता है और एकदम ही फनी एक्सेंट में बोलता है. आई थिंक इसीलिए हटा दिया वो शॉट. बट या देखा रोनित भाई क्या होता है जब ये लोग अपनी असली आवाज में बात करते हैं, ठीक है? तो you guys remember this movie where Hitler is played by Raghuveer Yadav and Gandhi, he does the whole... No, Gandhi is not played by him. Gandhi he plays both Gandhi. वही तो वो मूवी का स्टिक वो था that he plays both Gandhi and Hitler. And Eva Braun या कौन है उसकी जो बंदी थी, नेहा धोपिया. नेहा धोपिया plays. I do not what Neha Dubey played. This is taking Raghuveer Yadav Hitler. Aditya taking your idea to extreme कि अरे भैंचोद आज के लिए बना रहे हैं. पर एक सेकंड, वो मूवी देखी है क्या तुम लोगों ने? नहीं, मैंने पोस्टर देखा था. उसमें भी कंट्रोवर्सी था, पता है? हाँ. उसका कंट्रोवर्सी ये था कि उसका नाम पहले था माय डियर फ्रेंड हिटलर. तो लोगों ने कहा भाई एक सेकंड सर, बट उसका नुआंस ये है कि that is how fucking Gandhi started his letter, my dear friend Hitler. तो वो दिया था बेचारे. यार ये मैं I don't want to do the joke. It's a fairly old joke that Gursimran Khamba had done once, which I had seen live. भरत शायद तू भी था, मेरे साथ पता नहीं. हाँ याद है. जब उसने I don't want to do somebody else's joke ऐसे, but उसका बेसिक ये था that गांधी ने हिटलर को लेटर लिखा था कि यही होता है जब आपके फैन आपको चढ़ा देते हैं कि सर आप लिखो एक बार, आप एक बार बात करके देखो, फिर कुछ होगा शायद. Which was a great set. Yeah, Amir Khan has said no, that was Nathuram Godse and Gandhi. I think you're confused. Maybe. I'm not but confused. There was a movie where Raghuveer Yadav played Hitler and he played Gandhi. Maybe he's doing a whole Marvel universe of this where he's also playing another movie where he's doing Godse and Gandhi. But who knows? Anything is possible. I doubt he played. Okay, let me Google this shit. Anyway, you guys continue. Abhyuday, I'm really sorry, has said Yorgos Lanthimos' Poor Things trailer is everything you would expect it to be. यार मैं देखा नहीं trailer, but in fact I had not even heard that उसकी movie आ रही है, but I am a massive Yorgos Lanthimos fan. I love everything. Fucking Dogtooth, legend movie. Killing of the Sacred Deer, great movie. Lobster, उसकी favorite is amazing. The Favorite. उसकी सारी मूवीज बहुत ही बढ़िया है. मैं आई थिंक एक दो भूल रहा हूँ, वो भी मैंने देखी हुई है. भाई गांधी is played by अभिजीत दत्त. Anyway. अच्छा कोई और ही था क्या? Okay. I thought अभिजीत वो था. अभिजीत दत्त. हाँ, he's a good actor. Yeah. I've worked with his daughter, who's also a very good doctor, actor. Did a doctor in this. हाँ, तो Bharat, are you also a Yorgos Lanthimos enjoyer? Are you? I am. I like. Although I'm not like some kind of like fuck मजा आ गया ऐसा नहीं, but I like the cinema. नहीं यार, मैं तो I'm in that space. He's one of the best. मेरे को मैंने बहुत recently Dogtooth देखी थी, about month and a half, 2 months ago. बहुत अच्छी फिल्म है भाई, amazing. And Killing of a Sacred Deer तो है. Killing of Sacred Deer देखी है मैंने, और Dogtooth देखी, और तीसरी भी कोई है ना? Lobster. Favorite. The Favorite. फिर एक और क्रेजी वाली मूवी है जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ. How is the film? बहुत सही है, बहुत फनी है. I think you should definitely watch it. But yeah, The Favorite तो बहुत ही मस्त. हाँ, तो क्या कह रहा है Lobster? I think just to remind the audience about, I think सबने शायद नहीं देखी होगी. I don't know if people. Lobster का ना synopsis is the craziest one. Like whenever I think about it, it's like if you're in a world where if you don't find a partner to like marry, you're gonna turn into an animal. Himanshu, do you find this relatable as a single man? I feel like, not personally, but I feel like this is something like an Indian thing, like it feels like a very Indian movie, like a
tasty kind of a joke in it, because it's like एक तो अरेंज मैरिज का प्रेशर होता है इंडिया में, जो कि शायद बाकी कंट्रीज में नहीं होता. तो जब when you are in a world where if you can't find anyone to be with, they will take you to a hotel, and in that hotel you will have like 45 days. In that 45 days, you have to do tasks with different people and find one person that you like. If you can't find someone, then you'll be turned into an animal. Like that's the final punchline. मुझे सबसे बेस्ट चीज योर्गोस लांथिमोस की ये लगती है, which Cinephile 007 has also said in the comments. He said he has said Yorgos films are very much about society than individual. Yes. Also, मैं वही कहने वाला था that Yorgos Lanthimos picks his stories very carefully, you can tell. वो एक बहुत ही specific type की stories के लिए वो जाता है, something that very obviously largely makes you very uncomfortable. That twists scenes that you have in your head already. Also, he tackles things so specifically. जैसे अगर वो डॉगटूथ में है, तो डॉगटूथ वो पूरी एक फैमिली की कहानी है, and it's about parenting, and it's about restrictions, and it's about a world that is going a little crazy, and these mini worlds that people form within themselves in their families. It's about all those. It's about growing up and adolescence, or those things. Whereas something like Killing of a Sacred Deer, while in a similar way, in fact, no, Killing of a Sacred Deer, I feel like is almost like a natural extension of a movie like Eyes Wide Shut. I feel उसका spiritual sequel कभी-कभी, because उसमें भी दोनों, वो एक डॉक्टर होता है और उसकी वाइफ होती है, and I think the wife is Nicole Kidman only, no, who's in Killing of a Sacred Deer. Is it? So it's the same actress as Eyes Wide Shut. उसमें भी they're behaving kind of oddly. It's a weird world. There is all those elements kind of made me very. It's very exciting. I think I'm looking forward to his new film. I want to check out. Nice. उसकी अगली. Ben Affleck की एयर कैसी लगी? मैं नहीं किसी ने देखी? तूने बोला ना कि तूने देखी है भरत ग्रुप में. मैंने कहा भाई आ गई है, मैंने नहीं देखी. हम लोग कब से ये कर रहे हैं ना, इसलिए हमारा पॉडकास्ट नहीं चलता. हम लोग बोल देते हैं कि मूवी आ गई, इसका ट्रेलर आ गया, ये देख लो. हम खुद ट्रेलर भी नहीं देखते, मूवी भी नहीं देखते, बस बैठ के आ जाते हैं जूम कॉल पे. But I want to talk about a bunch of films. I have seen Afwah, by the way, which you guys should really watch. I really like the movie. It is not perfect, okay? It has a bunch of I'll tell you, if you guys, again, this is a conversation to be had after the movie. Because I know Khanna especially and we both like a kind of films that Sudhir Mishra makes, and this is, I feel, a proper return to form. Like, it's not your कि हाँ अच्छी है but kind of a thing. It's more like हाँ भैंचोद वापस आ गया types. He is come back types. So it is a proper return to form. There is barely any music in the film, and okay, maybe I am a sucker for this kind of style, but it doesn't lead you on in any way. No scene will lead you on to believe or feel a certain way. It doesn't try, like how in, देख अभी मुझे क्या लगता है, liberal filmmakers का एक clique है जो which is sanctimonious and heavy-handed, I feel. Especially ये जो भीड़ का director है, अनुभव सिन्हा, who's also, by the way, the producer of this film, of Afwah. तो थोड़ा बहुत rub off किया है, एक आध scenes पे लगता है कि he's talking at us than with us. लगता है एक दो scenes में मुझे वो लगता है, but by and large the film is not your social message film. It doesn't have, even the main character is not like Nawaz. He's not a morally anything character. He's just like a regular dude trying to do normal things. He's like a Sandeep Maheshwari, no? He's not a Sandeep Maheshwari. He's more like a यार ad की दुनिया में आजकल कौन है जो थोड़ा Gen Z type का है, मुझे मालूम नहीं, वैसा है. Sandeep Maheshwari is more about motivational speaking. This guy doesn't do motivational speaking. ट्रेलर देख के लगा था वो. भाई इसका ट्रेलर इतना गंदा है ना, इतना both all the bad lines that you see in the movie in the trailer are not in the film. For example, I was giving this example to Khanna, जो end में कहती है ना वो लड़की, एक इंसान को कुछ मेरे को बहुत गंदा लगा था. पूरी लाइन ना ऑफ स्क्रीन है, मतलब द कैमरा इज ऑन नवाजुद्दीन, वो कुछ कर रहा है अपना और बैकग्राउंड में बातें बोल रही है बकवास, ठीक है, ये होता है. एंड इवन एक और डायलॉग कि अरे तुम लोग क्या खड़े खड़े क्या देख रहे हो, एक लड़की के
साथ ये हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, दैट इज बैकग्राउंड, पीछे हम कुछ और देख रहे हैं और इनकी आवाज पीछे आ रही है, ऐसा है. सो इट्स वेरी, आई फील कि बैडली कट. हाँ, मतलब सुधीर मिश्रा को भी मालूम था कि भाई ये सब लाइंस को बस निकाल दो साइड में. And but it's and you know the first like shot of the movie is also very nice. This guy is driving down some random ऐसा single lane highway और ये jazz सुन रहा है अपने उसमें. पहले न्यूज चल रही है उसमें, फिर न्यूज में कुछ आता है कि अभी पॉलिटिक्स में ये हो रहा है वो हो रहा है, and he's like Siri play jazz and jazz start playing and सामने से मतलब it's like you guys have to see it, but it's that sounds good. But you know, just talking down to हम लोग ये इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, अनुभव सिन्हा की सिनेमा की हमको पसंद नहीं है. बट मुझे सबसे ज्यादा अनोइंग लगा था आर्टिकल 15 में. ठीक है, आर्टिकल 15 का पहला शॉट है कि बॉब डिलन का म्यूजिक बज रहा है, एंड आई रियली लाइक डिलन, बट उसका हाँ वो कौन सा ब्लोइंग इन द विंड, राइट? सो वो बज रहा है एंड आयुष्मान खुराना हैज दिस मंक लाइक स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके बाजू में एक आधी पढ़ी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब है ऑन जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, ओके, ठीक है. आईएएस वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो आईएएस के लिए पढ़ रहा है उसने पढ़ी होगी ऑलरेडी, और वो ऐसे फालतू में ऐसे वो फिल्म मेकर नहीं है 50 साल का जो प्रूव करना चाह रहे हैं अपने लिबरल क्रेडेंशियल्स को जो लेके घूमेगा. बट वो ऊपर से एक तो ये दिखा रहा है ये फिल्म में, उसके 1.5 घंटे बाद मूवी में दिखा रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर जो यूपी से ही है और जो मतलब जो अपर कास्ट है, और वो आईएएस ऑफिसर बन चुका है, या आईपीएस ऑफिसर है ना, वो आईपीएस ऑफिसर बन चुका है. वो आईपीएस ऑफिसर है यूपी में, और इसको आइडिया ही नहीं कि कौन क्या कास्ट में. तू क्या बात कर रहा है भाई? तू हाउ डिड यू पास द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइक यूपीएससी, यू नो, लाइक तुमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या पढ़ लिया बताओ, जो तुम्हें कास्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम? हाँ भाई, मतलब कुछ भी. तो बहुत रैंडम था. बट इसमें भी देखो एक आध फ्लॉज हैं, बट दोस फ्लॉज आर नॉट ऑफ दिस नेचर. द फ्लॉज आर ऑफ कि यार ये क्यों हुआ, मतलब इट्स मोर लाइक अ थ्रिलर फ्लॉ कि दिस इज इम्प्लॉजिबल समथिंग दैट हैज हैपेंड. But yeah, it's very nice. You guys should. I feel it's a very good film. And Sumit Vyas, तुम लोग को पता होगा कौन है, right? He's Mickey from Permanent Roommates. Yeah, he's played a very nice. He's played a proper Sudhir Mishra protagonist. Like some guy called Shiny Ahuja. Yeah. Yaar, there is some problem with Sudhir Mishra and promoting his movies because हजारों ख्वाहिशें ऐसी का पोस्टर जिसने भी डिजाइन किया है, इतना गंदा डिजाइन किया है, which is nothing to do with anything. ना वो उसका फिल्म से कुछ लेना देना है, ना वो कैरेक्टर से लेना देना है, ना ही फिल्म में ज्यादा कोई बंदूक है मूवी में. पता नहीं क्यों तीनों से सूट, एरा भी गलत है, तीनों ने सूट पहना हुआ है, एक फ्लैशी सा. मेरे को पता नहीं किसने ये किया, किसका डिसीजन था ये. बट also the film is shot very well, by the way, very well shot. It's like प्रॉपर, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने they have tried to tell a story through camera work. Very nice, very nice. How is Nawaz though? Is he very bad? Is he standing out? No, I don't know whether it's the direction given to him or whether he's, to me he seemed like he was sleepwalking. कुछ नहीं कर रहा है. अच्छा, मतलब no good lines, no memorable stuff. Nothing. Very flat. He's completely flat. And I think maybe it's a direction thing. Maybe after a point I was like कि इससे क्या कहना चाह रहा है सुधीर मिश्रा, मतलब ये क्या, is he saying that he's an empty shell and तुम अपने दिमाग से भरो कि ये कैसा आदमी है, whatever. होता है ना कुछ मेकर्स को कि भैया नाम नहीं देना मुझे, ये प्रोटैगनिस्ट है, तुम देख लो क्या है. वैसा नहीं है, जबकि it has a very good scope. In fact, भूमि पेडनेकर has come out very well. भूमि पेडनेकर did well. ये अपना, अरे ये बहुत अच्छा है इसमें. You remember फैमिली मैन में जो उसका वो दोस्त बना है, SK JK जो भी, हाँ is very good in this film. Very good. Sharib Hashmi, very nice. I really like that actor. Yeah. He's done nice, and he's done very well here. देख लो, basically watch this movie. Now that you said, now that you brought up web series and all of that, I think you did. Family Man. So whether he's asked thoughts on The Hard, I have not seen The Hard, but I'm hearing very good things. मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा. यार मैंने जब ट्रेलर देखा था ना तो मुझे थोड़ा फटीग हो गया यार ये स्मॉल टाउन मर्डर मिस्ट्री से.
लेकिन अगेन रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो आई माइट जस्ट वॉच इट. यार मुझे तो उल्टा वो so Bharat, maybe we should, and Himanshu, we should I was actually thinking this, and the audience can tell us that we very rarely talk about, you know, the process of writing or the process of direction or whatever work that we do. You know, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, हम लोग इंडस्ट्री का मतलब ऐसा कुछ हम लोग बात नहीं करते उतना ज्यादा. So maybe we should at some point talk about these kind of things also. The reason I say this is because I, like, for example, Bharat, both of you all know, I'm trying to pitch a show which I've written. So मैं, और वो बहुत ही अर्बन शो है, तो मुझे तो जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, मुझे तो यही बोल रहे हैं लोग कि यार सब लोग को रूरल चाहिए अभी, तो एवरीथिंग इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन अगेन. अर्बन वाला थोड़ा बहुत हो गया. यार तो आई एम सेइंग दैट मे बी वन ऑफ द एपिसोड्स वी कैन टॉक अबाउट जस्ट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज it would be, I think it would be a lot more fun for us also in terms of getting into how we write, or what we, the fine tuning points of what we enjoy in screenwriting or direction or whatever. One more thing I want to say. तुम लोग देखे क्या तू झूठी मैं मक्कार? मैंने 20 मिनट देखा. मैं बहुत, भरत, मैं जब तेरे साथ बाहर गया था, तेरे और with our other friend, so we went out drinking. We drank a lot of alcohol, and I came back home and I just put it on. कुछ तो खाली बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए था, कोई बैकग्राउंड नॉइज, तो मैंने लगा दी, मतलब चलो देखते हैं. तो मैं 20 मिनट देखी. बहुत ही वाहियात घटिया फिल्म. हाँ, पर अच्छी होती है बात. क्या बात कर रहा है तू? नहीं, तो okay, again, this is something that we should talk about after the movie. It's overall a very bad film. I agree with you. First of all, the basics are terrible. उसका जो शूटिंग है बहुत घटिया है. पूरी फिल्म भाई, अच्छा मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था डिस्कॉन्टेंट ग्रुप पे, where एक ट्रांजिशन शॉट में ना you can see the green screen. You can literally, even if you guys want to see it right now ना, एक गाना है उनका बेदर्दिया करके, उसके गाड़ी के शॉट्स हैं बहुत सारे. एवरी कार शॉट के रिफ्लेक्शन में you can see a white stand in studio. मतलब होता है प्रॉपर white. मैंने पॉज करके देखा भाई, मतलब बहुत गंदी. टेक्निकली इट्स अ fucked up movie and I don't know what went wrong. तो तुझे अच्छा क्या लगा? ये सब तो बुरा ही बोल रहा था यार. मैं डिस्कस करूंगा अगर तुम लोग देख लोगे तो. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं देखने में. मैंने देख लिया. मैं जितना भी, कितना ही अच्छा होगा भाई, जहां से मैंने उसको छोड़ा था, बहुत ही weird. Okay. No, but Love Ranjan movies na I've seen. First half bullshit, okay? First half jokes. Second half story picks up and it's still shit only. But the story is in the second half. Yeah, that's true. That is true for this film also. It's a प्यार का बंदा में 1 2 सब चीजें हैं, यही हो रहा है. हाँ, तो मैंने उसकी पुरानी फिल्में ऐसे कभी गौर से नहीं देखी, तो मैं नहीं कह सकता हूँ. आई एम श्योर यू आर राइट. बट मुझे इस फिल्म में जो इंटरेस्टिंग बात ये लगी, इट पिक्स अप अ डिलेमा इन मॉडर्न रिलेशनशिप्स व्हिच आई थिंक इज रियल, बिकॉज आई हैव सीन दिस अराउंड मी कि देयर इज वन व्यू पॉइंट व्हिच इज कि भैया मुझे इसमें रहना है, मुझे क्या कहते हैं, जॉइंट रिलेशनशिप नहीं, जॉइंट वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. वो 4 साल बाद जो आएगी मूवी, उसका प्लॉट होगा लव रंजन की. सॉरी, गो ऑन. मुझे जॉइंट फैमिली में रहना है, ठीक है. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दीस पीपल, दे आर अमंग अस. एंड देन द अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि नहीं भाई, मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना है. आई एम मैरिंग माय पार्टनर, आई एम नॉट देयर फैमिली, ऑल दैट शिट. तो हाउ डू दीस टू थिंग्स वर्क टुगेदर इज व्हाट द सेंटरपीस ऑफ द ड्रामा इज. बट इट shit. What is the conclusion of it? Don't say that. मेरे को नहीं पता. हिमांशु अपना ईयरफोन निकाल दे. नहीं, बता दे. नहीं, मैं नहीं देखने वाला. Spoiler alert. Okay, very quickly in 20 seconds I'll tell you the thing. लड़की चाहती है, लड़की उससे बताती नहीं है कि I want to break up with you. Why? Because she sees that he's very close to his joint family and he can't live without them. And he loves both of them. So वो उसको सामने से नहीं बोल सकती, उसका दिल नहीं तोड़ सकती. तो वो ये ब्रेकअप एक्सपर्ट के पास जाती है कि तुम ये ब्रेकअप करवा दो, जिससे कि उसको लगे कि उसी की गलती है, ठीक है. एंड इन द एंड शी एक्सप्लेन्स दिस टू दिस गाय बिकॉज ही इज द ब्रेकअप एक्सपर्ट. एंड शी एक्सप्लेन्स टू हिम कि भाई मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकते, एंड आई नो कि यू लव मी ऑल्सो. तो मैं नहीं चाहती कि मैं हूं वो चीज जो तुम्हें अलग करे अपनी फैमिली से. एंड दैट आई cannot live with a joint family. मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए रहना, ठीक है. एंड में क्या होता है? एंड में होता है ये कि वो मान जाती है. एंड में वो मान जाती है, और पता है कैसे मानती है, कैसे घटिया तरीके से मानती है. वो एयरपोर्ट जा रही है, ठीक है. एयरपोर्ट बस टिपिकल बॉलीवुड सीन कि
लेकिन इसमें ट्विस्ट देखो, इतना गंदा क्रिंजी ट्विस्ट है कि द होल फैमिली गोज and the whole family proposes instead of Ranbir Kapoor. Wow. And I'm like, at this point, if I am the girl, I would have fucked off. I would have taken the flight. But she melts. तो भरत तेरे को अच्छा क्या लगा इसमें? मैं अभी भी ढूंढने की कोशिश कर भाई रहा हूँ मेरे तेरे को ये पसंद क्या कॉन्फ्लिक्ट है? इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि कोई अच्छा वैसा ये फिल्म नहीं, I don't but I'll tell you, Aditya, but हाँ somebody I know, I won't take the name, who's like in a relationship, said that after watching that movie, I had some serious thoughts about my relationship. So मैं बोल रहा हूँ भाई, एक सेकेंड, दीज आर द मोस्ट मैं भी समाज में रहता हूँ, ठीक है, तो मैंने भी देखे हैं लोग मेरे अराउंड, मैं खुद मतलब आई एम मैरिड, आई वी स्टे इन लाइक माय फैमिलीज हाउस, एक्सेप्ट माय फैमिली इज नॉट इनसेन येट, दे आर वाचिंग, सॉरी, हाय, बट पॉइंट इज दैट ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दे आर वेरी नेचुरल इन जनरल, बट दे आर वेरी, मेरे को ऐसा कुछ वो, और जो तू बोल रहा है ना कि दैट योर हिमांशु that somebody got very this thing by it. Bhai, Love Ranjan ka whole trip only is to give trigger relationship no people. trigger breakups, because trigger the ego of the boy in the relationship. उसने अपना उसका पूरा करियर इज जस्ट दैट कि मैं, that's तो true. बेसिकली ये मूवी देखने के बाद जो बंदा होगा वो क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसी फैमिली होती नहीं जो आके पूरी फैमिली आपको प्रपोज करेगी पागल जैसे, तो जो Yeah. रियल लाइफ में सिचुएशन ये होगी कि बंदा होगी बंदी होगी और वो लोग डेट कर रहे हैं और वो लोग को शादी करनी है, बट जॉइंट फैमिली है, ओके, अभी इवेंचुअली ये बंदा मूवी देखेगा और बोलेगा हाँ तो क्यों नहीं आ सकती हो मेरे साथ, क्यों नहीं रह सकती, ये श्रद्धा कपूर तो रह रही है, रणबीर नहीं वही है, that that is what it's aimed at. It is हाँ. aimed, that is the fucking, that is why it's shit Yeah. because it actually for a brief period of 20 minutes it takes you through the girl's side of the thing and she actually makes a lot of sense, a lot more sense than in fact Ranbir Kapoor. So for a moment I was like, हो सकता है ये लोग कुछ मिडिल ग्राउंड निकाल सके कि भाई हाँ. लड़की बोले या लड़का बोले ठीक है बहनचोद, आई विल मूव आउट ऑफ माय फैमिली हाउस, आई एम फकिंग 30 व्हाटएवर, यू नो, हाँ. but no, she just agrees and there is no conversation about it. Correct. The conversation is कि oh I won't force you, I won't force you, and then the family says how could you just let her go. हाँ. इतनी ही प्रॉब्लम थी तो हमें बता देते, हमें क्या, हम चेंज कर लेंगे अपने आप एक को. तो ये लोग बहुत ही अमीर फैमिली, मैं फिल्म पे आऊंगा वापस से, बट बिफोर आई फॉरगेट, जो भरत तू कह रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट, भाई ये तो सबसे कॉमन कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे तो मैं एक फिल्म बना लूं कि दो भाई है एक फैमिली में और एक भाई दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लेता है, ये 99% खानदान का यही हाल है, मतलब ये तो हर फैमिली में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. मेरा पॉइंट ये है कि भाई हाँ. for a brief, again I'm saying for a brief period in the middle of the film I thought कि दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू को तवज्जो दी जा रही है, बट वो नहीं है. वो ऑल्सो मैं फिल्म पर वापस आना चाहूंगा, शुरू में मैंने जो देखा 20 मिनट, उसमें ये बंदे की होती है मर्सिडीज का शोरूम, बड़ा सा होता है, जो बहुत ही मतलब मुझे क्लियरली वेरी रिच पीपल, बट देयर आल्सो फॉर सम रीजन गेटिंग पीपल्स ब्रेकअप्स डन, देयर वेरी लाइक very normal way to break up, matlab it wasn't like some fucking, it's like reverse hitch, right, like reverse partner, yeah, so वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मतलब I don't understand what is the why you're already rich, no, like why are you doing this, like मेरे को वो भी समझ में नहीं आया कुछ, वो बहुत ही रैंडम, बहुत ही, अरे पैशन होगा, पर पैशन, okay, I'm joking, I know you're joking. Passion of Ranbir Kapoor, Mr. Ping has said. Passion of Ranbir Kapoor to earn a lot of money. That is why we have to start. Apparently charge a lot of, apparently they spent 150 crores on this film, even though it's clearly shot in a studio. The whole film. Even that whole song, there is a song which is by the way set in the middle of, I guess, Punjab का कोई farm house जिसमें खेत वेत है, and you can clearly see that the house is in a studio and पीछे का पूरा the whole song. Bharat, this also, I think you give me a great segue, because there is currently a writer's strike going on in Hollywood to ask for better wages. Bharat, you and I have signed contracts very recently or are about to. तूने एक फीचर फिल्म लिखी है, मैंने एक फीचर फिल्म लिखी है, और जो पैसे आई थिंक तेरा तो फिर भी मिल रहा है, मेरा जो अमाउंट है वो खास कुछ है नहीं. And I will tell you that writers in this industry, after having worked 7 years, bro, we don't need to go on a strike. We need to form a टीमस्टर्स लाइक गुंडो वाला यूनियन, ठीक है, जहाँ पर हॉकी स्टिक लेके सारा तोड़ के आए सर्वर, तब जाके थोड़े पैसे मिलेंगे, कुछ मिलता ही नहीं है भाई.
भाई पैसा आधी छोड़, पेमेंट क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब क्रेडिट नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, बहुत ही फकल सिचुएशन है। ऑल फुल सपोर्ट टू WG। भाई मैंने एक बहुत सही चीज पढ़ी, तो टीमस्टर्स जो इसमें भी है ना, हाँ, जो जिमी हॉफा वाले जो वही से आयरिशमैन पता है में, मुझे, तो और नहीं पता तो मुझे। टीमस्टर्स जो यूनियन, जो ट्रकर्स यूनियन है, अभी दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन इन अमेरिका। तो दे हैव अ पॉलिसी दैट इफ देयर इज एनी अदर यूनियन, राइट, दैट दे आर अलाइंड टू, और वो तो है ही, मतलब सबका एक वो है कॉमन दिस थिंग, कोई तो उनका एसोसिएशन होगा। दे हैव अ लॉ दैट अगर लेट्स से कोई और, जैसे अभी स्क्रीन राइटर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट, सो दे आर पिकेटिंग आउटसाइड स्टूडियोज। Yeah. So basically, Teamsters has a rule that if there are two union members on a picket line, they cannot, they literally legally cannot take whatever truck they're taking to that place, of work. So a lot of studios का sets are shut down because equipment लाने के लिए या vanity vans या जो भी चीजें लाने के लिए you need trucks to move stuff, और वो trucks आने नहीं दे रहे हैं because वो, तो this kind of organizing you need over here also. SWA, I hope you're listening. WGA का क्या फुल फॉर्म है? किसका? Writers Guild of Writers Guild of America. Cinephile is saying make union. भाई यूनियन का पार्ट हूँ मैं भी, हिमांशु को पता नहीं, भरत तो है ही, और SWA भरत, तू तो है ना यूनियन? रिन्यू करना है, नहीं किया है, तू रिन्यू नहीं किया? अच्छा 2-4 साल हो गए। हाँ मैंने भी नहीं किया था, देन आई रोट सब, मेरे को रजिस्टर करवाना था, बट हाँ वो भी मतलब इट्स जस्ट लाइक भाई इंडिया में मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है दैट यू कैन नॉट गो टू द यूनियन, which is actually I've been told that it won't stand hold in court, but हाँ तो if you Ramnik has said if you got it, a truck bought it to you. That's true. Jimmy Hoffa forever rest in peace. वाह क्या स्टोरी है, द मोस्ट हिलेरियस थिंग, दे ब्रेक अप एंड देन डू बॉलीवुड नंबर द नेक्स्ट डे, क्रिस नोलन वांट्स टू नो लव रंजन लोकेशन, वेडिंग क्रैशर्स। हाँ वेडिंग क्रैशर्स से इंस्पायर हुआ होगा ये काइंड ऑफ समवॉट। बजरंग दल ओपी, रोनित सिंह has said. Al Pacino for the win. I'm also part of you. Mr. Pink, I'm also part of Union Bank of India, which is very very nice. पर हाँ भाई, अगर कभी डिसकॉन्टेंट व्यूअर्स एंड लिसनर्स, 22 people who are watching this, if we ever have a strike, I hope all you fuckers are showing up with some kind of weapon in your hand. Let's be clear, we need all the help. भाई मत बोल ये सब, नहीं प्लीज डोंट शो ऑफ, डोंट एक्चुअली शो। भाई मैं तो बहुत सॉरी करके बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट का, मैं तो हाँ जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर पॉडकास्ट पर बड़ी बातें कर सकते हैं, बट वहां पर थोड़ी फट जाती है फिर। Yeah, what else do we want to talk about? Anything else? Karnataka elections. Karnataka election. You want to talk about Karnataka Manshu, elections? do you have any ringside, not ringside, but still, because we have talked, we are sure we have a lot of things to say. What do you have to say? I have nothing to say. भाई मैं तुम लोग को सच्ची बता रहा हूँ, मैं पिछले एक हफ्ते से आउट ऑफ माय होम टाउन ट्रैवलिंग, कल रात को 12 बजे पहुंचा हूँ। आई हैव नो आइडिया। अभी आज सुबह मैंने न्यूज़ में देखा था, but I have no idea what happened. Can you tell me what happened? Yeah, Aditya, you want to start? The Congress, Indian National Congress, won the election by a landslide. BJP has lost the election. They, I think BJP got some 60 something seats, and Congress got 135 or something like that seats. The mark they needed to win the election was 113. And yeah, Congress has won because and the third front, JDS, जिनका फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम, जनता दल सेक्युलर, जनता दल सेक्युलर, तो बाय नेम यू कैन टेल कि वो लोग भी कांग्रेस के साथ होते हैं। नहीं भाई, ये लोग गेम वाले लोग हैं, ये गेम वाले लोग हैं ये। So basically, as far as I know from the past 8 hours that I've been consuming content around the election, it is that JDS, they are only popular in one region of Karnataka. But this is all knowledge I've gained in the past 5 hours. Okay, so if it's wrong, fuck you. They are only popular in one region of Karnataka. वहां से वो लोग सारी सीट जीते। They were very popular and they used to be like main like kings at one point. Now they play the role of kingmakers because of the past few elections. Invariably, the Karnataka election would end up being like कि जो भी BJP or Congress को, they would always be short of 15-20 seats. So they would be the ones who would come and be like, they'd be the kingmakers, and they would never ally. As far as I know, they don't usually like to ally with people
the election because they see what the situation is. I But think that this has was- come to hurt them this time because now Congress has actually won it single-handedly, so they don't really need anybody, and their utility has gone down. But एक Yeah. second, as far as I know, again, this is pre-today information कि JDS ने बोला था कि we are pledging our support anti-BJP. As far as I know, maybe I'm वो wrong. तो उनको पता चल गया ना कि ये लोग हार गया, एग्जिट पोल भी आ गए थे और ये लोग क्लियरली हारने ही वाले थे. सो वो सब अभी दे हैव सेड, ये तो सीधा बोर्डजुआजी में सेगवे ले लिया. यार बोर्डजुआजी पॉडकास्ट हमारा दूसरा पॉडकास्ट है, आप 4 एपिसोड है, मेरे हिसाब से बहुत फनी है. तो पॉलिटिकल कॉमेडी पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, मैंने और शौनक ने, बट ज्यादा फन नहीं आ रहा था तो हमने वो अभी डाला नहीं है. बट हमने डाली लोग इलेक्शन पे डाल दो एक बार हम लोग अच्छे से एक और दिन मिलके, एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे थे जनरली, तो वी वर मोर इन द मूड टू जस्ट चिल रादर देन ट्राई टू बी फनी फॉर इंटरनेट पीपल. सो या तो वैसा था, बट वी विल ट्राई टू डू एन एपिसोड. रिंकू पाजी, भरत भाई अविनाश अरुण की मूवीज 3 of Us का कुछ बताओ कब रिलीज होगी. तेरे को कैसा मालूम? नहीं मालूम, बट उसके अगेन जहां भी फेस्टिवल में आई है बहुत अच्छे रिव्यूज हैं उसके. Like people have called it the best film this year kind of a thing. रिंकू पाजी is also asking me to say कि अतुल सर की मूवी बर्लिन के बारे में मैं कैसे बताऊं भाई, मतलब I. But do you know about it? Yeah, but like it's not my place to say. Yeah, so I've not worked on Berlin, but I know what it is, but I've not worked on it. Ramnik Layal has become a broker. He has joined membership of DissContent. Right now? I believe Ramnik, you were a member already of the podcast, but if you would like to join our WhatsApp group, I think we did add you to the WhatsApp group, but if we haven't, then please get in touch on either on Instagram DM on DissContent or mail me on the email ID that is given, and I'll add you to the WhatsApp group. घर वापसी season 2 when? Abu De Mehrotra. Bharat, what is your नहीं say? पता मुझे. I don't know. I really don't know. So no clue. Correct. But maybe we can raise this point in the writers हाँ जरूर. whatever. Oh, Yeah. bhai, Ramnik has said, Himanshu, this is payment for watching Himanshu Arya की degree film for free. ये मेरे को बेस्ट है क्योंकि हिमांशु आर्य की डिग्री फिल्म बनी थी दूसरे यूट्यूब चैनल पर, ब्लू पेंसिल एंटरटेनमेंट जो इनका चैनल उसका फायदा हम उठा रहे हैं. उसका पैसे आ रहे हैं हमको. तो Wow. आभाश is our inside friend. Abash, if you're watching, your money I owe you like whatever 150 rupees. Yeah, Abhash, first of all, thank you. Thanks a lot. Also, Abhash se yaad aaya, we should get Abhash because he just got a movie out. Yeah. Right. What is that movie called? Gaslight. Gaslight. अब मैं बोल सकता हूँ Gaslight पर मैंने उसके बहुत अर्ली ड्राफ्ट पर मैंने काम किया था. बहुत पहले. But I haven't watched the film yet. Bharat has watched the film. I have watched the film. I kind of liked it, but clearly I'm not the majority here. मैंने देखी नहीं. भरत, हिमांशु तूने देखी है? नहीं. Everybody who's watched it has chat on it, except me. You. Mr. Pink, ha, season 2 of Ghar Wapsi means a guy shifts back to Bangalore. भाई ये actually season 2 will be very funny अगर वो ऐसा ही कुछ होगी. वो उसने घर इतना इमोशनल हो गया, बोला घर अभी सहा नहीं जा रहा, प्लीज मैं जा रहा हूँ, निकलना है. हाँ यहाँ से. अरे मैंने बोला था, मतलब अर्नेस्ट सजेशन था भरत को, उस दिन ही बोला था जिस दिन देखा था सीजन 1 कि फॉलो अनदर कैरेक्टर, यू नो लाइक वो मतलब हाँ आइडिया अच्छा है. इससे आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ. और बट आई नो नथिंग. हाँ गॉट इट. हम देते रहेंगे एडवाइस, तू सुनते रहे. बाद में कम बैक टू दिस एपिसोड लेटर. बाकी हम लोग क्या चीज का बात कर सकते हैं या बात करनी चाहिए? केरला फाइल्स के बारे में कुछ भी कहना है आप लोगों को? केरला स्टोरी नहीं, मैं अर्ज करूंगा क्योंकि मैंने रिव्यू वगैरह तो सारे पढ़े हैं क्योंकि आई वाज इंटरेस्टेड, आई वाज फॉलोइंग इट, एंड आई आल्सो I mean it's kind of like sad and disturbing कि it is part of our parents का everyday conversation also, like it was with Kashmir files, and that is sad. I'll tell you why, because क्योंकि from all sources, again I have not seen the movie, nor do I intend to, but from all sources it paints every Muslim as bad and villainous. So इसमें ध्रुव राठी का एक वीडियो बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो मैंने शेयर भी किया था अपनी स्टोरी में, क्योंकि it basically takes each and every point of the film.
it doesn't go directly into कि सब चुतियापा है, कुछ भी सब बकवास है. It takes each and every claim of the film and compares it with what actually happened. He doesn't say that, oh, nothing like this happened. He tells you that, and he basically tells you how these people, I think 7 in total, 4 of which were Christian women, 3 of whom were, 4, sorry. If you have 2 minutes, I'll explain. 4 of whom are Muslims, or were already Muslims. They were Muslim by birth. 3 of whom were Christians, and 2 of whom were Hindus. All of these converted on their own will, went to fucking ISIS on their own will, and are currently there because Indian government says we're not going to take them back. Of course. And one of their recent interviews is in which they are proclaiming loyalty to the cause, to the Islamist cause, Islamist terrorism cause, whatever. So the point is, these are adults. These are adult women. They are not the victims. They are not, at least as of now, the story, the real life story goes, they're not victims in any way. They chose this. They're still there. They're proudly belonging to that ideology. And this is literally all the 7 cases from Kerala. Out of which some 2 or 3 of the cases are within one group of people only who knew each other. So they're all very specific case. Yeah, go on. And sort of he also makes the comparison to other countries where people have gone to join ISIS, went to join ISIS. And from India, I think कुछ ऐसा 2-digit figure में लोग गए थे. So US State Department has said that there are, according to their survey, it's about 60 odd people. I think according to Government of India data, there are a total of 100 people. But pan-India. That's pan-India. And he compares it to the ratio of the population in India, the Muslim population in India, and the Muslim population, let's say France. And वो कहता है France से ratio में 7 times ज़्यादा लोग गए हैं join करने than all of India. So my point is, ठीक है, there is definitely an issue. This is an issue. And we should definitely talk about, there are documentaries that talk about this. But this is not the way, I'm sure. Again, this is also, I feel like movies like these are dumb as fuck because there is a way to show these kind of things. ऐसा नहीं है कि, और ये लोग जो बोलते रहते हैं ना that हिंदुओं को इंसल्ट करते, हिंदुइज्म को नीचा दिखाने वाली मूवीज बहुत सारी बॉलीवुड ने बनाई हैं, और बट इस्लाम के ऊपर भाई, on Islamic fanaticism, some of the best movies and some of the most well recognized, widely watched, not even controversial films that much have been made in India. Shahid is one example. Black Friday is another example. Black Friday is a film. I remember Anurag Krishna ने बहुत सालों पहले एक बार ट्विटर पे किसी को रिप्लाई दिया था कि उसको बोला था आप सिर्फ मुसलमानों को ये करते हो, आप हिंदू हो, आप कभी मुसलमान पे कभी फिल्म बनाकर दिखाओ तो सही आप, और फिर उसने कोट किया था उसका कि भाई ब्लैक फ्राइडे तेरे बाप ने नहीं बनाई थी. तो इट्स वेरी फनी. सो माय पॉइंट इज दैट देयर इज, जैसे अगर आप शाहिद का प्लॉट पकड़ो, ठीक है, शाहिद इज अबाउट शाहिद आजमी, अ लॉयर, a guy from Bombay. He was a witness to 92 riots in Bombay. He was radicalized. He went to Pakistan for training, came back on his own will. As a minor, I think. As a minor. He came back, went to jail, went to prison for a crime he wasn't involved in even. Did his time in prison, became a lawyer, became a human rights lawyer, eventually gets assassinated. So I'm saying that is such a great story. तुम अगर एक फिल्म बना रहे हो, right? तुमको केरला स्टोरी बोलनी है, तुमको इंडिया स्टोरी बोलनी है, तुमको जो भी स्टोरी बोलनी है, the idea is always that you try to capture the complexity of the characters at that time. What is the milieu that these people are coming from? तुम entirely तुम्हारा purpose यही है कि दिखाना कि ओ ये तो कितने बुरे, हाँ ये कितने बेचारे. अगर तुम्हारा ये, then it's not a film, then it's a टुच्चा सा व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने वाला वीडियो जो बनते रहते हैं 4-5 मिनट के, जो पता नहीं कौन बनाता है. सो इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ दैट. एंड when you want to talk about something as serious as fanaticism, which is there, of course it's there in Islam, of course it's there in Hinduism, of course it's there in pretty much every religion, you need to do it with a bit more maturity and with an understanding कि क्यों ये हो रहा है. And because if you're interested in solving कि ये क्यों हो रहा है, तो आप वो, जैसे ब्लैक फ्राइडे में there is that chapter of what is past is prologue, they tell you the context.
इसमें शाहिद में they give you a proper context. इसमें I haven't watched the film, I have no interest, and I'm 100% sure कि उसमें कोई घंटा कोई context देगा उसका. तो yeah, I don't think so. And also Dhruv Rathi is getting a lot of brownie points for this, right? Because I saw this one thing which I have been thinking for years. कि किसी ने tweet किया that Dhruv Rathi gets a lot of flack from like ultra like liberal or left people or like people, very dogmatic people who are like, oh ये issue पे ऐसा बोल दिया अभी fuck off, so but he actually is doing so much to battle stuff because he's saying things simply कि हम लोग को लगता है ये सब बहुत ही simple चीज है, but it's a very simple thing I feel. कोई इंसान होगा जो फेंस पे बैठ के उन साइड वालों के लिए बोलता है, exactly. Right? There are a lot of people who will speak about to us, right? हम लोग भी एकदम परफेक्ट लिबरल्स या परफेक्ट इस साइड वाले लोग नहीं है, तो हमें भी कोई ना कोई ज्ञान चोद सकता है जो कि सही है, पर उन साइड वालों की बात की भाषा में बोलने वाला लोग कम होते हैं, राइट? दैट्स व्हाट आई थिंक ध्रुव राठी का स्पेस इज. तो ऑफ कोर्स कई पॉलिटिक्स पे वीडियो वो कम बनाता है आजकल ना, ही इज रियली रिड्यूस्ड इट. आजकल बहुत ही यूजलेस वीडियोस बनाते हैं, फिर एक वीडियो निकलती है उससे पॉलिटिक्स से. आधे तो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं. ये स्पेशली केरला स्टोरी ऐसी जो मूवीज हैं, यू मतलब इन एनी सिनारियो व्हाट इज, एक तो मेरे को सबसे ज्यादा डर लग रहा है केरला स्टोरी जैसी हमने देखी. बॉलीवुड हम सबको पता है कि पैसों के पीछे तो मतलब इनका सब कोई एक चीज के फैन है ये लोग, भाई साहब तो पैसे के हैं, ठीक है. ये कोई अगर इनका एक कोई ईमान धर्म है बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो पैसा है. इन लोगों ने अभी देख लिया है. आई थिंक विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी कश्मीर फाइल, दैट कुड हैव बीन ट्रीटेड एज ओके, ये तो एक सिचुएशन है, बट नाउ दैट दे हैव शोन दैट इट्स अ रेप्लिकेबल मॉडल दैट कैन बी मेड इन डिफरेंट प्लेसेस to one curry favor with the government, where literally the PM will campaign for your movie, and two, you will recover your money in droves, plus the public loves you all of a sudden, right, which they don't otherwise. So yeah, I mean अभी आ गया ना टीपू का, देखा तुम लोगों ने भाई? बहुत ही रैंडम टीजर है. इट्स बेसिकली अ मोशन पोस्टर ऑफ टीपू, एंड उसमें पूरा ऐसे स्टैटिस्टिक्स है, इतने सारे हिंदुओं को मारा, इतने सारे टेंपल जलाए, एंड देन the poster of the film is टीपू का ऐसा फेस आता है और उस पर कालिक पूज जाती है. So it's like, and this is made by the producers of Narendra Modi movie, the movie. The movie PM Narendra Modi. Vivek Oberoi's greatest role since Prince. जिसने की थी. He's made some great villains, no? Like he played in Krish 3 में उसने कुछ किया था, कंपनी में. PM नरेंद्र मोदी में भी विलेन ही है वैसे. Great. I saw that coming. You saw that? Man, actually, I fucked up. I had the joke in my head, and I was gonna go on the rule of 3 flip wala cheese, but I started off from Narendra. Yeah. But ठीक है, good. एक बात बताओ, टीपू के मूवी में विलन कौन है? मतलब टीपू यार नहीं, but यार टीपू how do you make somebody whose name is टीपू of टीपू है भाई उसका नाम? टीपू कैसा नाम है? नहीं, बट देखो टीपू का राइवल मत बोल. टीपू सुल्तान यार. कौन किसने क्या बोला? मैंने या हिमांशु ने? आदित्य मैंने क्या बोल दिया? The name, don't make fun of it. मैं नाम, but I don't think anybody. भाई nobody likes him. मैं उसका नाम का मजाक उड़ाऊं तो क्या हो जाता है? No, people like him. I can't even cyberbully टीपू सुल्तान for his name. No, all I'm saying is, तो क्या फायदा हुआ हमारी इंडिपेंडेंस? तू छत्रपति शिवाजी महाराज का भी. हाँ, got it. So I think Tipu's life has been mostly like wars against the British. So and I get that he's always been painted in this bad light as a anti-Hindu king, but his story is anti-British, right? I mean he fought against the British. Yeah, so how much of his story about him being anti-Hindu is part of the narrative of this movie? Like how much can you tell? Going to be the major thing only. That is it. Yeah. But then he had 4 wars with the Britishers and 0 wars with other people. So I'll tell you what. Sorry, bol. He had wars with Marathas. I'll tell you what. My whole problem with Bollywood making history films or period films also, at least of that, when you go way back to that time when there were, and also people attaching their personal emotions to it is a very big problem, because it's like, even like, for example, there are entire class of people who will argue that Aurangzeb wasn't as bad as he's projected. Okay. Like, I think there was something of, उसने कोई तो mosque, कोई तो मंदिर का demolition उसने order किया था,
then there was some defense of it कि नहीं वो टाइम का एक कोर्ट ऑर्डर दिखा रहा है कि उसने एक्चुअली वहां पर कुछ तो गंदा काम हुआ था, उसको उसने एज अ पनिशमेंट वो सब. तो मैंने बोला भाई तुम आज की सरकार का, कोई भी सरकार, कांग्रेस बीजेपी जो भी हो, मैं तो ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी बोले, मैं पहले चेक करता हूँ आजू बाजू में क्या हो रहा है. तो तुम मतलब 16-17 सेंचुरी के गवर्नमेंट्स का तुम कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स का तुम ऑन फेस वैल्यू ले रहे हो? एक तो वो चीज, तो उनको डिफेंड मत करो. पॉइंट इज वी I think people lose the bigger picture, which is that we left God king monarchies, right? These were God kings. They were kings. They derived their power from a divine being, which is how they got power. And entire point of all these, the history was that most of these people were fucking hated the other religion. That was most of them. Some of them were rare in that scenario that they did not have that much. But it is very, very likely that they had this feeling because this was not a fucking peaceful time, bro. This was a very hardcore time. Average age expectancy, like life expectancy at 25-30. तुम क्या बात कर रहे हो? Why are you imposing today's morality on those people? They're obviously going to have fight wars and be ruthless and do crazy weird shit. Have you not read enough history to know there is gory shit happening all the time? Even by the way, I was reading The Authority on Chhatrapati Shivaji Maharaj, the book that is The Authority on him, which was written in the early 20th century. And in it mentions how the Marathas were not revered. In fact, they were feared in Bengal. Borgis they were considered plunderers in Bengal because they were the plunderers there. Again, this is not a moral statement. This is what is historical. Marathas fought with Marathas. Yeah. Shias fought with Sunnis, right? Mughal versus Nizam. This has happened a lot. Like, it's not, whenever we kind of put a historical figure as the spearhead of, a religious war, and we kind of try to say that, oh, Vijayanagar was like this, or Tipu Sultan was like this. They were kind of taking, or Marathas were, they were taking care of a certain sensibility or certain religion. They were the ones saving a certain religion. It feels like that's in retrospect, you're creating a story, a narrative. I mean, you really can't tell how much of it is true. A lot of it is just us talking. Now we are just re-evaluating what happened. Also, this is the same as whenever people talk about this stuff, like especially like right-wing people, whenever they talk about this stuff कि तुम जब जैसे जोधा अकबर बनती है, ऐसे मूवीज बनती है, इसमें उनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, मुगल्स को या डिफरेंट लोगों को, या मतलब I just find that you're like there is so much emotional baggage that these people are putting on these historical figures, which are, again, I'm reiterating, these were really wild times, guys. Like I will give you a recommendation today, which was I forget the name. Dan Carlin का एक podcast है, एक episode है, एक ही episode है 4 घंटे का, which is it's basically an ebook at that point. It's on the siege of Munster. Okay, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, it is during the Protestant Reformation. There was a city called Munster in present day Germany, and वहां पर there was these people called the Anabaptists. They were like Protestants के भी Protestants, and they were like extreme religious group, which were very different from they had sort of gone away from the Catholic Church. So there was a whole battle between this city and the Catholic Church का people who were sort of attacking them and trying to get them back into the fold. तो वो अगर तुम सुनोगे ना, तुम्हें पता लगेगा कि हिस्ट्री जितनी भी तुम जाओ, it is so gory. Every part of the world, everywhere there was violence. It was crazy. To impose your morality today, what you should do, and ideally you have to do, is that whatever is the lasting damage, right, which is recent, which is like caste, like slavery, there is a very clear lineage. You can tell that these people today are disadvantaged because of these things. Over here, the context is, especially in India, when it comes to kings, the context is very, very different. I mean, especially considering after British rule, a lot of these things got very reset. Like the Mughal Empire vanished, the Nizam. I mean, all of these things got very muddled up. You can't make it into one clear binary of Hindu v Muslim or whatever. I mean, Hindu kings had plenty of Muslims in their army, generals. They had Hindus. There was, it's just, history is replete with all this. I also feel कि भाई तुम इतना भद्दा
मतलब you're not even wailing why you're making these movies now. मतलब तुम्हें it's a clear agenda. तुम्हारा एजेंडा ये नहीं है कि मैं कुछ बात कहूं या कुछ कहूं, तुम्हें बस you have to. उनका एजेंडा वो भी नहीं है, उनका एजेंडा है पैसे बनाना. जिस बंदे ने बनाई है उसने बनाई है नमस्ते लंदन, उसने बनाई है नमस्ते इंग्लैंड, फोर्स 2, कमांडो. जब से ये लोग आए तब से ये मिलिट्री वो सब थोड़ी हैवी हार्डकोर फिल्म कर रहा है. जैसे यूपीए या कोई कांग्रेस आएगी वापस से ये लोग वही बनाएंगे. देखना विवेक अग्निहोत्री वेरी केयरफुली बैलेंसेस आउट हिज ट्वीट्स आल्सो नाउडेज समटाइम्स, बिकॉज इट्स लाइक कभी गलती से दूसरे लोग आगे पावर में तो ये करता है. मैं तो अंदर की बात लाने की कोशिश करता है. आई वाज ऑलवेज दिल से तो हम हमेशा से मनमोहन सिंह फैन ही रहे, मतलब ऐसा कुछ बोल दिया बाद में आके. तो हाँ ये सब ही है. I love our audience. Rinku Baji and Ramnik Layal both remind me what that episode was called. It was Hardcore History, episode 48, Prophets of Doom. Great episode. I mean, just crazy. You get a real sense of how fucked up history was. I mean, just to give you all an example, Bharat and Himanshu, in this city, because there was a siege of Munster, right? So historically sieges hoti thi. The first thing that they would do is they would cut off your food supply, right? That taki no supplies can reach inside the city. Bro, people started eating animals very quickly, like insects, rats, all of those things. When they got exhausted, people started killing their own family members. People started eating their own kids. Okay. Because they were being starved over, because after a point your brain stops working, when there's not enough nutrients. History is that hardcore history again. So history is very hardcore. If we try to get like, oh, this really ultra violent act happened from this community on this community in 1800s or like whatever in like 1600s 1400s, it doesn't. I mean, literally everybody at that time was really fucked up and violent. Anyway, किसी और को कुछ कहना, मैं बहुत लंबा हो गया ये वाला. नहीं, I agree. हिमांशु, तूने रिसेंटली एनार्की पढ़ी थी, तुझे कैसा लग रहा है हिस्टोरिकल फिल्म्स और ये सब? कि मेरा तो दिमाग फट गया था एनार्की पढ़ के. मैंने बैक टू बैक 10 हिस्ट्री की बुक्स पढ़ ली. एक तो विलियम डेरेम्पल की मैंने 4 या 5 उसकी पढ़ी है, और मैंने 4-5 मन्नू पिल्लई की पढ़ी. मैंने I was I think now in this last 2 months of just reading books only, like I feel like, and that too only history books, I've suddenly gotten this crazy perspective which I never had before. And like Adit, you guys have always spoken about history very well. I couldn't, because I didn't have it. And I feel like suddenly my mind has opened up. Like there's so many things to talk about, so many complex ideas, that at some point we should just discuss history again, like an episode just on history. Just talk about incidences that happened. For example, we can start a new podcast only. Yeah. No, because we have नहीं कर सकते हैं. We can podcasts. decide. नहीं, why not? मतलब ट्राई करते हैं ना, फेंक के देखते हैं, चलेगा. जैसे अच्छा आइडिया, बिकॉज एक हिस्टोरिकल इवेंट हम तीनों उसके बारे में पढ़ के आते हैं, and then we can talk about it. And or we could do what these people did na, ki every episode, and it can be shorter episodes, like let's say this episode I bring up some historical thing that you guys don't know about and I explain it. Correct. And we can ask questions. Or but it should be proper storytelling. Yeah. It should be. उसके लिए माइक और ये जैसे कैमरा, तेरा ऐसा बैकग्राउंड ऐसा वो नहीं हो सकता हिमांशु, थोड़ा सा अपने बेटर करना पड़ेगा. Yeah. 100th episode I'll just make my thing proper, professional. The mic and the light and the camera and the whole drill. रिंकू पाजी has said एनार्की का शो आ रहा है. हाँ, और मेरा बहुत दिल टूटा था उस दिन. Roy Kapoor Films has bought the rights of Anarchy, and William Dalrymple said they're making a Game of Thrones level, because he said the stories, which if you read the book, the stories are amazing and out of this world. So if you are to adapt that, उसने बोला था you should adapt it full with all the pomp and with everything, otherwise there's no point. और मेरा दिल टूट गया क्योंकि मुझे बहुत मन था अडेप्ट करने का और लिखने का. मैंने थोड़ा बहुत किया भी है, थोड़ा मस्ती इसमें, बट मेरे पास है बुक. मेरे पास है, मेरे घर पे पड़ी हुई है, तू ले ले मेरे से. हाँ, मुझे तो 1-2 शॉर्ट फिल्म आइडियाज आए थे उससे, काफी अच्छे हैं. मतलब you can actually and make it like fiction even though it's based on real story. But almost every story in Anarchy is like filmable. It's like they're all a movie.
You're आई supposed थिंक to watch it. ऑथर्स भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं. उनको पता है ये कि अगर असली पैसा कमाना है तो फिल्म राइट्स में है, तो फटाफट लिख के अपना आईपी बनाओ. तो इसके लिए विद मनु पिल्लई एंड दिस गाइस देयर राइटिंग इज वेरी सिनेमैटिक. बट मैं एक चीज बताऊं, मैंने सब मल्टीपल बुक्स पढ़ लो ना एक हिस्ट्री ऑथर के, यू रियलाइज दे आर रिपीटिंग. They repeat a lot of stories, but just from different perspectives. Same incident, उसका कुछ और पकड़ के मतलब बोलेंगे, फिर कुछ और पकड़ के बोलेंगे, कुछ और. So you realize अच्छा ये तो उस बुक में भी था, उस बुक में भी था. It's just basically copy pasting a little bit but changing the context. मिस्टर बिंगर से धीरे धीरे अपन ब्रैकेट्स दिस कंटेंट गुरुजी ब्रैकेट बियर बाइसेप्स के वश में चले गए because you're talking about doing a history podcast. भाई ये भी मेरे को लग रहा है कि ये भी जरूरी है भाई. कोई काउंटर ही नहीं करता ये सब चूतियों को. कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी बके जा रहे हैं. एक चैनल है जो मुझे इंडिया में दिखता है जो काउंटर करता है, एटलीस्ट देयर सूडो साइंस, व्हिच इज दैट साइंस इज डोप. वेरी नाइस चैनल, वेरी नाइस चैनल. एक ही बंदा है, आई एम गेसिंग. बाकी सब बकर करते हैं, सब फालतू का बकर करते हैं. एनीवे चलो रिकमेंडेशंस करें. यस, इतनी तो दे दी मैंने. मेरा तो प्रॉफिट्स ऑफ डूम एंड हाजिमे नो इप्पो एनीमे. ओ नाइस. मेरे पास एक किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ. मैं एक बार एक सेकंड होल्ड ऑन. भरत, ओह एक सेकंड. नहीं देखेगी, तेरे मुंह के सामने डाल. ब्लर ऑफ कर दे भाई. क्या यार, पीछे तुम्हें मेरी अटैची दिख जाएगी. रुको, चलेगा कोई प्रॉब्लम. सो वेट, ऐसे मूव ये मिरर्ड क्यों है? एक सेकंड होल्ड करो. चलेगा, दिख रहा है. द बेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ आइजैक एसिमोव. भाई ये ना शॉर्ट फिल्म्स है ना, शॉर्ट स्टोरीज है ना. हाँ, बट this is basically, so Asimov, not a lot of people, by that I mean me, don't know that for a large part of his career, which is like 4 or 5 years, he wrote only mysteries, and not mysteries in science fiction. These are like, and he has given a preface to it. He says that I love detective mysteries, but of a very specific kind. And he says that I don't like mysteries where there's a cop out. I don't like murder. He's like, I don't like to show death or violence. So any death or violence that happens, it happens off screen and only once. He's like, I will never write a story where, जैसे अगाथा क्रिस्टी लिखती है ना कि there's one murder that happens, then धीमे just to spice things up, there's another murder, and then all of that. तो कहता है, I'll never do that. I am only concerned with one mystery, and I will always leave clues for the audience to know, for the reader to be able to tell by the end. And he's like, by design, he wants all mysteries to be set in a single room without any external factor. So everything is laid out in front of the reader, and they can actually, if they want to, they can predict. And he's like, many people have predicted wrongly, rightfully, but they all enjoy it. So this is like a whole collection of detective mysteries. And just if I could talk about one of the kind of mysteries, it's called the Black Widower's Mysteries. It's like the whole format is कि ऐसे 10 लौंडे हैं, basically bachelors of that time. वो लोग मिलते हैं एक monthly dinner पे, and so every story starts and ends with the same way, and they are all very intellectual, very highly educated people. और हर एक meeting में one of them introduces a mystery to the rest of them, and they try to solve it. And by design, each story ends with their butler who's serving them food. He comes and solves the mystery. So it's a very, very enjoyable collection if you like, murder mysteries. अगला पढ़ूंगा मैं ये. I'll read this up. Yeah. Nice. So I'll recommend the one which I'm reading now. What? I'm forgetting the name of the author, but the book ka name is Why We Sleep. Okay. Have you guys heard about this? No. So it's like for years, scientists are trying to explain why do we sleep, like the question. And what is it about? Why do we dream? Okay. But the thing is, mostly people say it's like unexplored. We don't really know. So there is this guy who's been researching on this, like एक हार्वर्ड का प्रोफेसर है, 20 साल से रिसर्च कर रहा है. उसने लिखा है ये बुक, and it's not the name kind of suggests why we sleep might seem like a motivational book also. It might be like mental health. You should take care of yourself. You should sleep, because the reason why you should sleep is so that you get
your पर वो mental वैसा health नहीं है is- तू कह रहा है. It's a very it's scientific absolutely, book. it's completely it's just database, and it's like what it does to your body, how different people have different reactions to sleep, how much hours you need to, and whatever. Like it's about mostly anatomy and sleep related. How sleeping well really does, like there's this one thing which info which like it kind of struck me very hard. Like daylight savings time hota na, like in Western countries they shift, like if once in a year they shift their time. Only US, not Yeah, even in US they shifted by 1 hour. So हाँ. for 1 hour, people are little for that one day when it shifts now, that 1 week of the daylight saving time shift to it, the 1 hour less of sleep results in like 10% more heart attacks in that week. Like that week has a spike in heart attacks. And when it comes back and there is like the next year or like half a year later when they have to reshift it, so that that week gives them like a bit more time to sleep, there is a fall in heart attacks, like the rate of heart attacks in America. And there are many like important data which really fit, like how does caffeine stop you from sleeping, whatever, the ideas that there are many myths and stuff. And I felt like this book is really good. Like it's very interesting. You guys will like it if you ever get to read it. Who's it by? मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं अभी Right. पढ़ रहा हूँ, बट मेरे सामने नहीं है Kindle, ये but किसी like, ने लिखा है, मिस्टर पिंक ने लिखा है, JSDK recently appeared on Beer Bicep, समझ में, Vikram Sampath followed. Who is JSDK, bro? JSDK कौन है? देख लेते नहीं हैं है. ना. Anyway, so I want to, तो मैंने अपना ये सब recommend कर दिया, anime और ये Prophets of Doom hardcore history का. बट मैं बुक में बता देता हूँ तुम लोगों को. मैंने I don't know मैंने लास्ट टाइम की थी नहीं, बट इंडिगो बाय सत्यजीत रे वो मैं रेकमेंड की थी. ऑल्सो एक बुक जो भरत के पास है अभी मेरी, जिसका नाम है बाबूराव बगुल्स व्हेन आई हिट माय कास्ट. दैट्स आल्सो वेरी गुड. एंड मैं आजकल बहुत सारी एंथोलॉजीज पढ़ रहा हूँ. सो दैट भाई जे साई दीपक. ओ जे अरे भाई जे साई इतना लंबा क्यों लिख रहा है भाई? फिर जस्ट राइट ब्राउन बेन शपीरो, दैट्स ऑल. पूरी बात ही क्लियर हो जाएगी. बेन शपीरो भाई वही है. अमेरिका में जो भाई, भी चीज होती है उसकी 8 साल बाद हाँ. इंडिया में होती है, और ये बंदा बेन शपीरो बनने की कोशिश और कर ये रहा है. वही है, मतलब तुम 2 मिनट के लिए उसकी बात सुनो तो तुम्हें लगेगा हाँ बात तो सही कह रहा है, बट देन यू थिंक अबाउट इट फॉर 30 more seconds, लाइक नो दैट्स बुलशिट. Bro, ये he's like an idiot right winger's idea of a smart intellectual. That's a same. He और उसका भी सेम, उसका स्ट्रेटजी, बेन शपीरो स्ट्रेटजी वही. सेम. फटाफट बात करता है. हाँ Very वही good ना, in talking. मैं वही कह He's रहा a हूँ. lawyer, so he knows how to Yeah. fucking rotate an argument around and try to fuck with you on that. तो वही करता है वो. और उसकी आर्ग्यूमेंट घूम फिर के वही आती है मैं कि वही कह रहा हूँ. हिंदू सिविलाइजेशन वो सब. बस इंडिक सिविलाइजेशन से. Indic civilization. I reject वो same school of Anand Ranganathan, this guy, a bunch of these people. Who cares? भाई एक सॉरी एक ट्वीट मैंने आज पढ़ा अमित मालविया का. उसमें he's saying कि even though we've lost, हमारा वोट शेयर बढ़ा है, ये वो. फिर उसका पहला कमेंट है, अब यही बात रो रो के बोल. So anyway, So yeah, I mean that is that was the episode for today. Thank you guys for joining us. That's it. Okay. JSDK is a reference to BSDK. ये वाला that makes much more sense. Nice. किसने किया ये भाई, मिस्टर पिंक. मिस्टर पिंकी भाई, मिस्टर पिंकी है. प्लीज जॉइन यार. मेरे को Please तेरा join. चेहरा देखना है, तो एक बार आजा पॉडकास्ट में मिस्टर Face पिंकी. reveal हो जाए. Yeah. हाँ. We are assuming it's a man because of the mister, but it Yeah. could be a woman or somebody else also. One incident happened, went to watch PS2 at INAX, and at ticket counter, she said, I have to take popcorn, cold drink, and chocolate compulsory. Ticket 160, total 400. Nafis Alam has said this. ये क्यों हुआ? What? Are you sure you went to a movie theater only? और तुम किसी के घर पे तो नहीं मतलब कोई, ये क्या था ये कवर चार्ज कोई, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि you have to compulsory buy cold drink, popcorn and chocolate. क्यों chocolate का को है? Diabetes हो Are गया you sure किसी. you're above 18? Yeah. One, Nafis, I really want to know more, my friend. Like, tell us more. What happened? Inox is doing that Wait. everywhere. What? The fuck? नहीं भाई मेरे. 1 second, unbelievable. हम लोग अभी गए कौन सा थे. चॉकलेट बताओ, पहले बताओ कौन सा चॉकलेट है. कैडबरी दे रहे हैं या कुछ ढंग का दे हम रहे हैं. चाहिए पे उनका. हाँ. It depends on
Facts don't care about your virginity. भाई अच्छा है यार, बड़े अच्छे कमेंट करते हैं यार ये तो। हाँ भाई, हम लोग का भी, मेरे को ये भी लगता है कि हमें थोड़ा सा, और हम लोग भरत और हिमांशु, हम लोग ये थोड़ा, चलो मैं थोड़ा क्रेडिट लूंगा अपने ऊपर कि मैं तो थोड़ा सा ये एंथू पर मैं हूँ भी लाइफ में थोड़ा ऐसा, तो मैं ऐसे बात करता हूँ। तुम लोग थोड़े मतलब ऐसे होता है कि भाई क्या ही बात करें मतलब इन लोग से, बट इट्स लाइक इफ यू डू दिस, ये लोग काफी फनी लोग हैं यार तुम लोग। यू गाइस डोंट गिव दिस गाइस अ चांस, वी कैन मेक इट अ मच मोर फन एक्सपीरियंस ओवरऑल। भाई 26 लोग देख रहे हैं। ओ सॉरी बातों से बातें निकल रही है, तो आदि पुरुष का ट्रेलर देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा हाँ, मैंने। देखा, हिमांशु, उसका देखा, क्योंकि नहीं देखनी ना, तो मैं बोला कि ट्रेलर इसका देख लेते हैं, बट क्योंकि देखी, तू बट तो आई वाज इम्प्रेस्ड विद द वीएफएक्स दिस टाइम। थोड़ा बेटर लगा, थोड़ा सा बेटर लगा, उतना कि मतलब इट वाजंट स्ट्राइकिंग, ऐसा नहीं लग रहा था कि पोगो है, पोगो कार्टून नेटवर्क नहीं लग रहा था, बट येट some shots तो you could tell। सैफ अली खान है ना आदि पुरुष में? सैफ अली खान है, वही ठीक लग रहा है अभी फिर भी। सैफ के साथ ही हमेशा ये होता है कि उसकी फिल्म का ट्रेलर आता है, वीएफएक्स बहुत घटिया होता है, फिर फिल्म डिले हो जाती है कि लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। तुमको याद है रेस 3 के साथ या रेस 2 के साथ है? ही हुआ? रेस 2 के बाद बहुत सालों पहले ये हुआ था तो गाड़ी कि बदल वो गई। लैम्बोर्गिनी होती है और वो जैसे वॉक कर रहा है और ऐसा बटन दबा के एक्सप्लोजन होता है, और वो जैसे एक्सप्लोजन होता है उससे 1 सेकंड वाली यू कैन सी द, उन्होंने एडिट भी बराबर से नहीं किया है वो फ्रेम। इट चेंजेस इनटू अ फक ऑल, इट्स लाइक कसिनो का ओपनिंग फ्रेम। कसिनो में भी ये फकअप है, ठीक है, मानेंगे बात, पर सर जी को सब कुछ अलाउड है, बट उसमें ये फ्रेम तो उसने भी उन्होंने डिले करके चेंज किया था वो सब काफी। भाई मिस्टर बी का आदित्य, तन्मय भट्ट, हिमांशु कुल्लू, भरत मिश्रा, विशाल विशाल दायमा। ओके भाई ये कुल्लू नहीं कुल्लू बोलना कौन है? चाहिए था यार। भाई कुल्लू फनी आदमी है, तो तू कुल्लू, ए वी मेट कुल्लू यार। ये वो हैंगिंग आउट विद कुल्लू काइंड ऑफ, आई मीन वी वर हैंगिंग आउट विद वैभव, with Vaibhav Munjal of Chalchitra Talks, and yeah, एंड at that same party this dude was also there, तो और हम लोग विशाल काफी कौन? फनी विशाल दायमा है है एक, एक। ऐसा छोड़े, मेरे को डेडमैन नाम सा ही नहीं बनता पता। है। हाँ हाँ, अच्छा है, गुड। nice यार, thank you I don't know whether you mean that as a compliment or what, but thank you। हमारी अगर उसकी 1/4 भी उसकी रीच हो जाए तो मतलब लाइफ ही सेट है फिर। Here in Lucknow, I had to pay 300 rupees for a 120 ticket, and they made popcorn complimentary when I went to watch PS2. And Nafis Alam, I argued. Then she called the manager. Then finally, she gave me ticket only. What the fuck? क्या चल रहा है? वन Miss, बैड, ये ना, उसमें लिखो यार, बुक माई शो के रिव्यू ये सब में लिखो। हाँ भाई, ये चीज तो बहुत ही खराब। Do you think we should, for the 100th episode DissContent, we should book a theater and do a screening with whoever, like if there are enough people who want to show up, and वो screening में we will only show DissContent podcast के episodes। अबे ऐसा कर सकते और हैं, सर, पता है क्यों? हाँ क्योंकि पीवीआर की न्यू स्कीम लॉन्च हुई है। हाँ 1 रुपए में, मैं तेको बताया था, हाँ, 1 रुपए में तुम आधे घंटे ट्रेलर देख सकते हो। करेक्ट करेक्ट तो वैसा करते हैं, हाँ। पूरा हॉल बुक करते हैं, 60 सीट्स। हालत खराब है भाई इंडिया की, अगर ये सब स्कीम अगर काम आ रही है लोगों के, तो मतलब बहुत बट ही। दिस इज वेरी अफोर्डेबल टू बुक आल्सो। बट क्या करोगे तुम भाई तुम ट्रेलर ट्रेलर देख देखो, के? इट्स लाइक एसी की हवा खाओ, 30 मिनट चिल करो 1 रुपए में। मतलब ऑटो वाला भी जाके मस्ती चिल कर सकता है 1 रुपए देके, सोच ना। The idea is that to draw in more crowd, कॉइन, हाँ रैंडम, नॉट रैंडम चलो मतलब। वो आइडिया ठीक है, लाइक प्रमोशंस एंड मार्केटिंग ठीक है, बट किसी के पास इतना टाइम है कि I वो have one question. Are ट्रेलर? we gonna show national anthem before that, before the trailers also? तो भाई ये पता है, ये अभी एक पूरा अभी एक फॉर्मेट हो गया है कि पहले एक राइट विंगर मूवी बनाता है, लाइक कश्मीर फाइल बनी, फिर केरला फाइल बनी, केरला स्टोरी बनी, और उसके बाद जब ये रिलीज होता है, देयर आर लाइक अ फ्यू आउटरेज वीडियोस ऑफ दिस होल जॉनर ऑफ दिस, ऑफ द थिएटर में जो लोग आए थे, सम क्रेजी पीपल फाइटिंग विद द मैनेजर कि तूने एसी बंद कर दिया। ठीक है, तुमने एसी बंद कर दिया और तुमने नेशनल एंथम नहीं चलाई। तो आई वेंट टू दिल्ली एंड आई डिस्कवर्ड व्हेन आई वॉच पठान इन दिल्ली दैट एक्चुअली नेशनल एंथम नहीं चलाते हर मूवी के पहले इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। मुंबई में कंपलसरी है फॉर सम रीजन, तो मुंबई में पहले से होता आ रहा है, बहुत पहले से, तो बट बाकी जगहों पे ये होता जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। Also, isn't it again like some loophole की नेशनल एंथम रात के वक्त नहीं चलनी चाहिए, ऐसा होता है क्या? कुछ तो but नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, अच्छा वो बट फ्लैग का है शायद। पॉइंट इज कि वो दैट देयर आर पीपल फाइटिंग विद द थिएटर कि तूने एसी बंद किया। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि
is there because this is a great conspiracy. If it's a conspiracy that only for these right wing movies ये theater होना बोलता है AC होती है इन लोगों का सड़ने दो ऐसे करे मूवी but other than मतलब ये कैसा टाइप का तुम basically they watched the movie in my मेरे को लगता है ऐसा होगा they watched the movie and they wanted to like outrage about something they wanted to because they were very angry so they want to fight somebody they were like अभी सबसे पास में है मेरे को थोड़ी सी गर्मी लगी थिएटर में तो मैंने जाके लड़ लिया तो I watched PS2 with only 6 person in the theater so it was PS6 person 6 but मुंबई में जहाँ चल रहा है I don't मुंबई में कहाँ चल रहा है I don't see it Mr. Pink you're from Mumbai oh ना धीरे धीरे हमको सारी डिटेल पता लगी मिस्टर पिंक के बारे में गुजरात में भी कंपलसरी है भाई अंडरस्टैंडेबल यार PS2 देखना चाहता हूँ देखता हूँ मैं अगर निकली नहीं है दूसरे कौन से मूवी देखे अगले एपिसोड के लिए क्या सक्सेशन एयर मैं सक्सेशन तुम लोग और क्या कुछ और है कुछ बैरी का फाइनल सीजन है आई थिंक जो है बैरी पे तो मुझे बहुत पीछे जाके स्टार्ट करना पड़ेगा भाई 5 ही तो एपिसोड है हर सीजन के तो लिटरली 5 नहीं 10 तू कहाँ से बोल रहा है तू सक्सेशन नहीं बैरी तो 20 मिनट के एपिसोड है और ज्यादा लंबे नहीं मतलब इट्स लाइक वेरी शॉर्ट you can finish it in like 2-3 days if you actually binge it सक्सेशन एंड बैरी का सीजन फिनाले सेम डे 26th में तो फिर अगला एपिसोड तभी ही करना है क्या 26 में सक्सेशन को कैच अप करते हैं यार सक्सेशन करते हैं हाँ तब तक कैच अप करते हैं फाइनल एपिसोड देख लेंगे और फिर एपिसोड कर लेंगे ये वाला ठीक है सही है ओके काफी टाइम के बाद हम लोग आए बट वी गिव यू ऑल अ प्रीटी फकिंग लॉन्ग एपिसोड 27 people थैंक यू वेरी मच like the stream and subscribe to the channel if you'd like to otherwise whatever चलो हो गया सब कुछ bye guys bye bye good night